voices from the grassroots. And this special feature event is being organized by Integrated Mountain Initiative. And we would like to invite on dais the chairperson of this important session, Sri Ramesh Negi ji. Please welcome Sri Ramesh Negi ji to this dais. Sri Ramesh Negi is the former Chief Secretary, Government of Uttarakhand. He is the Indian Administrative Officer of 1984 batch. He has had a long experience, Arunachal Pradesh cadre. He hails basically from Himachal Pradesh, and he brings with him a tremendous experience of working in different facets of governance, mountain development, be it infrastructure development in remote areas of Arunachal Pradesh, or in Delhi. He has been associated with several, reforms and Yamuna cleaning and whatnot. So I don't want to go into detail, but again, welcome Negi ji. He is, most importantly, he is the president of Integrated Mountain Initiative. He would be chairing the session. Secondly, I invite Dr. Rajan Kotru. He is the counselor, Integrated Mountain Initiative. Please welcome him. Dr. Kotru is a senior professional formerly from Integrated Mountain Development ECMOD based at Kathmandu, and also he is the CEO of one important grassroots organization in Himachal Pradesh called Peace for All. And welcome Dr. Kotru. He is a forester by professional and extremely knowledgeable about Hindu Kush Himalayan issues and mountain development issues. And then I would now invite Sri Prahlad Adhikari. He is the senior consultant at Uttarakhand Council for Science and Technology. Please welcome him. He is a development specialist hailing from Uttarakhand. He has had, again, very long experience of working with communities, working with the development agencies, with the governments, and with the corporate bodies. So that is about and I would also invite Professor Durgesh Pant. He will be joining soon. And because in the way we have planned this session is initially we will have a few introductory and welcome remarks, then followed by a small context setting by Sri Prahlad Adhikari ji, followed by keynote address by Dr. Rajan Kotru, and after that there will be a small presentation by the representatives from Principal Scientific Advisor from Prime Minister's Council of Science. There are three gentlemen who have been working in Uttarakhand for a long time. They have been working on the development issues, community-related interventions in Champaut district. That Adhikari ji will be telling little more about that. And after that, as you can see in the program, we want to have 4 sub-panel discussions here. The 4 sub-themes are: first, the glacial lake outburst flood, GLOF, and flash floods. There we will have panelists working who will be bringing their experiences from different parts of Himalaya. They will come here and they will give their brief experiences. Then another sub-theme is landslides and extreme weather events. Again, representatives from different states of Indian Himalaya region, followed by community resilience and adaptation. There will be representatives who will come here for their short panel discussion. And finally, the last sub-theme is going to be innovation, collaboration, and communication, where laws, policies, and good practices and
their experiences will be shared by some other panelists. I'll be giving opportunity to each one of the panelists who are invited here. They have come here from far and wide places in the Indian Himalayan region, starting from Ladakh to Mizoram, Arunachal Pradesh. In addition, among the participants, we have a large number of representatives from different organizations and institutions here, including Graphic Era, Forest Department, and different professionals. So after that, we will have a session on summary and the conclusion. So that is the plan, and we will be giving opportunity to the invited panelists first, but after each sub-theme, the participants will be allowed to ask quick questions, and if there is no time, our volunteers and the facilitators are there. They will be circulating pieces of paper so that you can write down your question or comment or any recommendation you feel is relevant for each particular sub-theme. So the purpose of this particular session is to share the first-hand knowledge of the communities, good experiences, and some policy level recommendations, and where is the gap between science, policy, and practice. So all those things will be shared here. So without taking much time, I'll first invite the chairperson of this session, Sri Negiji, to give his brief remarks, and then subsequently we will follow the rest of the proceedings. Thank you. Namaskar. I think I can speak in Hindi and English mix. First of all, the role of the chairperson is normally ceremonial, and the wisdom has to come from the experts. So I think Dr. Rawat will spare me from many of the intricacies of the subject. But as a chairman of the session, and the session is especially curated by the organizers and IMI on the relevance, efficacy, and desirability of the voices from the grassroots. IMI is an organization, many of you must be aware, that it was conceptualized and initiated by committed people who wanted the welfare of Himalayas, and Dr. Tolia was the one who was the initiator, the leading light. In fact, we also pay compliment to him for his pioneering work in setting up an organization which is today a bridge between the communities, the government, and other stakeholders. So it is with that intention that Dr. Rawatji and especially Dr. Pant, they thought of it appropriate to have IMI curating this session. Whereas we work among communities, among experts, with the governments, we also look at the rights of the Himalayan states to get their rightful share in the finances of the union. Our efforts in last 10 years have been to get grants to the Himalayan states, and we've been very successful in 14th and 15th Finance Commission to get the forest-related grants, which are now 10.5%, and it's really been a big boost. And I must also compliment the support we've been getting from the Uttarakhand government. Our conferences, our meetings of chief ministers have been patronized by the Uttarakhand government. So once again, we are beholden to them. Coming to the subject of the voices from the grassroots, it's very ominous and also very timely that this conference is being held when the Himalayas have been last 5 months in crisis, the tragedy in Himachal, the tragedy we had in Sikkim, and the difficulty we saw with this rescue yesterday
we all compliment the will of those miners, the workers, and also the sacrifice and the risk-taking capability of the people who could prevail over machines. End of the day, it was those red miners they call. It was again a community. It was not the machine. It was not a victory of technology. End of the day, it is the man who matters. But there is a dichotomy in our development process that we give superiority to the machine technology. Perhaps we have to look back at the traditional wisdom which comes from the community. पिछले वर्षों में जो विकास का ये जो रथ चला हुआ है, क्या इस विकास में जन भागीदारी है? क्या ग्रास रूट के लोगों को विकास के मॉडल में पूछा गया है? या फिर जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हम कहते हैं कि अब कम्युनिटी को इकट्ठे होना चाहिए? वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन इज that community has to be heard at every stage. It's a policy formulation, project formulation, project monitoring, and end of the day, it has to be evaluation. But unfortunately, community is nowhere. Legally, we have EIA. Legally, we have many other things. We have very strong organizations. But the community is only a silent spectator. A time has come when communities will have to speak out, have their voice heard, and they should be partner in policy, partner in project formulation, and partners in project implementation, monitoring, and evaluation. One small example I will give, that when you have PM, Prime Minister Gramin Sadak Yojana, they have a model where the community is monitoring. But as we have bigger projects, it goes distant. The community is overtaken by technology and the management giants. Big companies, big engineers, and community is excluded. That's the sad part. And whatever we have seen, the risk Himalayas face is somewhere that we don't respect, we don't appreciate the sensitivity, complexity of Himalayan geography. It is perhaps that we are not respecting the science and community together. Making roads in Himalayas is not only an issue of civil engineer, it is an issue of geologist also. It's an issue of somebody who understands the fragile environment here. It is also an issue of community. Not going further in detail, I'm sure that our participants across the Himalayas, what the IMI has always been weaving together from Kashmir to the eastern side, Mizoram, Arunachal, Nagaland, we are going to have a very diverse experience how they have really stood up to the disasters and what there are aspirations for future as an experience as well as the caution. Thank you very much. Dr. Rawat, you may kindly proceed further. Thank you. Thank you very much, sir, for your introductory remarks. Now I invite Shri Prahlad Adhikari ji to set the context and also carry forward. मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री नेगी जी, राजन कट्टू जी, GS रावत जी, और जो इसके बाद जो इसमें संवाद होगा उस संवाद में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, अपनी बात करेंगे, उन सब
संभ्रांत अतिथियों को मेरा प्रणाम है, और उसके साथ साथ आप सब लोगों को, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप सब लोगों को भी मेरा सादर नमस्कार है। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट, ये केवल एक कॉन्फ्रेंस नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं, 5 पहले हो गई हैं, 6ठी है, इसके बाद भी होगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये एक कैंपेन है। आप लोगों में से अगर कोई उद्घाटन सत्र में उपस्थित था तो उसमें प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने, जो सूत्रधार रहे हैं इस वर्ल्ड कांग्रेस के विश्व सम्मेलन के, और उस बात को बल मिला था जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बात कही थी कि 2 साल पहले जब उन्होंने लोक और तंत्र के बीच में एक संवाद की परंपरा शुरू की बोधिसत्व के माध्यम से, पहले सत्र में जो बात निकल के आई वो ये थी कि डिसास्टर, आपदा प्रबंधन, क्योंकि हमारे लिए उत्तराखंड में वो चोली दामन का साथ है, आप लोग जानते हैं, आपसे अच्छा इस बात को कौन जान सकता है। और बड़े गर्व की बात है आज कि हम ये जो सत्र है, ये हालांकि करीब 800 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, 6 प्लेनरी सेशंस थे यहाँ पे, करीब 20 के करीब स्पेशल टेक्निकल सेशंस हैं, बहुत सारे स्पेशल फीचर इवेंट्स हैं, लेकिन ये जो सत्र है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे नेगी जी ने भी कहा, कम्युनिटीज़ की बात नहीं होती, समुदायों की बात नहीं होती। आज सिलक्यारा सारी दुनिया में छाया हुआ है, मशीनों की बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, होनी भी चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन वो जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे, जो साइलेंटली, कितना सारा उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, साइलेंटली जो प्रार्थना करते रहे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो सपोर्ट सिस्टम तो वही लोग कर रहे हैं, वहीं की धरती सपोर्ट कर रही होगी उन मशीनों को भी, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी बात होनी चाहिए। कल के दिन जब केस स्टडीज़ लिखी जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि वो बातें निकल के आएंगी, जैसे चिपको आंदोलन में रैणी की बातें निकली थी, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यह सम्मेलन देहरादून में होना एक बहुत गौरव की बात हमारे लिए, क्योंकि हम सब आप लोगों की बात सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और इसका माध्यम है। सरकार और समुदाय और समाज के बीच सामंजस्य की एक कोशिश है ये, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बोधिसत्व श्रृंखला से निकल कर आई है। और मैं समझता हूँ कि कल हालांकि इसका विधिवत समापन हो जाएगा, लेकिन हमारी जो यात्रा है उसके बाद शुरू होती है, और उस यात्रा में आप सब लोग हमारे साथ हैं, और हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाने का सपना देखते हैं जो डिसास्टर रेजिलिएंट हो। क्योंकि आपदाओं को, किसी ने कहा था कि आपदाओं को रोका नहीं सकता, आपदा एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि आपदा की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बाढ़ है, बारिश है, लैंडस्लाइड है, टेक्टोनिक मूवमेंट, ये सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं। वो कब आपदा बन जाती हैं, कैसे बन जाती हैं, तो उसके ऊपर में हो सकता है कोई रिसर्च कर रहा हो और कभी वो बातें सामने आएंगी। और इसकी खास बात यह कि हम आज हमारे बीच भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनकी जो टीम है, अग्नि की टीम है, वो लोग हमारे साथ चंपावत में काम कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से चंपावत विज़िट का एग्जैक्टली 1 साल हो गया है। 30 नवंबर से वो लगातार चंपावत में लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसका हैंडओवर भी होगा। वो हमारे लिए बड़े बड़े हर्ष का विषय है। और कोशिश यही है कि अर्श से फर्श मिले, फर्श से अर्श मिले। जब आसमां ज़मीन से मिलता है तो खूबसूरत नज़ारा होता है, और वही हमारी कोशिश है कि यहाँ से जो चीज़ निकल के आए उसको सारी दुनिया सुने। हिमालय का जो संदेश है वो सारी दुनिया तक पहुँचे, और हम इससे भी बड़ा अगले साल अगर हम ये समारोह यहाँ पे करें, सम्मेलन करें, तो इससे भी बड़ा विशाल हो, भव्य हो। आज 50 से करीब अधिक देशों के लोग यहाँ पे आए हैं, वो संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, और हिमालय की आवाज़ और बुलंद होनी चाहिए, तभी सारा उत्तराखंड और हमारा समाज रेजिलिएंट होगा, और उत्तराखंड विश्व पटल पर एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। इसी आशा के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1 साल से चंपावत में
चंपावत, आदर्श चंपावत भी बोधिसत्व से ही निकला हुआ एक रत्न है। चंपावत, मैं भी चंपावत से आता हूँ, इसके लिए मेरा विशेष लगाव है। चंपावत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़िला, मैं कहूँगा विकास की अगर जो प्रचलित मापदंड हैं उनके हिसाब से अगर हम उसका ये करें तो वो बहुत नीचे पायदान में आता है। और मुख्यमंत्री जी का अब वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, बॉर्डर पे स्थित है, और वहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी क्लाइमेटिक जोन हैं सारे के सारे जोन्स वहाँ पे मिलते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये है कि हम सरकार, जो लोकतंत्र है और जो लोग के जो सिस्टम है और जो कम्युनिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब मिलकर कैसा एक इकोसिस्टम बना सकते हैं और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल कैसे बन सकता है जिसको कि सारे उत्तराखंड में रेप्लिकेट किया जाए, और उसके बाद वो जो मॉडल बने उसको सारे के सारे हिमालयी राज्यों में उसका रेप्लिकेशन हो, ऐसी एक कोशिश है। और उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो हमारे साथी हैं वो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं रात दिन। और मैं कहना चाहूँगा कि जनरली अगर हम सरकार की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि सरकारी अफसर है तो काम करता है नहीं करता है, वो बड़ी दुविधा होती है। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे उस धारणा को बदला है, क्योंकि 24 घंटे कभी भी हमसे बात करते हैं तो तैयार रहते हैं। उन्होंने एक बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में उन्होंने क्या किया। उसके बाद में एक जो एडवाइजरी है उसका विधिवत हैंडओवर होगा ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। और आप सब लोग, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खुले दिल से। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो चंपावत पहुँचे हुए हैं और बड़े प्रभावी सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं वो वहाँ पे उनका परीक्षण हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अग्नि टीम का कि वो यहाँ पे आए। सानिद, will you please come to the stage and enlighten us with your presentation there. Thank you. Hello, can you hear me? Yeah. Hi, good afternoon, everyone. Firstly, I don't think it's visible. Right. Good afternoon, everyone. Firstly, thank you, Chair, the dignitaries on the dais, in the audience, the students, everyone. So what I'll be doing is just making a short presentation on the work that we have done in Uttarakhand, Adarsh Champavat, as Sir mentioned, and Uttarakhand as an exemplar site, but with larger Indian Himalayan region in mind. So Agni is one of the missions under the Prime Minister's Science, Technology, Innovation Advisory Council. We focus mostly on the technology, commercialization parts of it. There are other missions also, like waste to wealth, artificial intelligence, and others that some of you might already be aware about. Agni particularly is executed in partnership with Invest India, which is India's investment promotion and facilitation agency. And what we exactly do is kind of summarized in the process here. We basically, we go to any ministries और at the grassroots level पे जाते हैं, वहाँ के problems समझते हैं, pain points समझते हैं, and then we actually go on the field. And we go on the field, and like Adhikari sir was mentioning that, you know, the team has actually spent time in the field.
So we spend time on the field, we come up with technological solutions, we come up with detailing of problems, and then we eventually sort of present all this in form of a technology advisory note and how these technologies can then solve problems that we have identified. So just a quick starting point for us. As Prime Minister announced, the third decade of 21st century belongs to Uttarakhand, and we were looking at the impacts of climate change in the Indian Himalayan region and how we can, how technology can enable or support or empower the communities, and what we can do for the people at the grassroots level. And in that context, Uttarakhand became an exemplar state for us, where we thought we can demonstrate some of these models, which can then be replicated across the Indian Himalayan region. So just a quick step by step, I'll glance through it. This is the ये first phase है. यहाँ पे हम लोग ने agriculture, water management में काफ़ी काम किया था. अलग-अलग technologies, जैसे हम लोग यहाँ पे climate resilient की बात कर रहे हैं because of disasters, because of changing weathers, because of changing soil chemistry. तो different technology interventions इसको कैसे solve कर सकते हैं? Whether it's smart soil testing kits, animal intrusion kits, animals are entering farmlands, what we can do about it, or even water management. The nalas are drying up, and so what we can do about these things? How can we empower the communities to fight some of these challenges? So these are some of the technologies जो हमने वहाँ पे field showcase में present की थी. So पहले हम चंपावत में, जैसे अधिकारी जी ने बताया, पिछले नवंबर में हम चंपावत गए थे. तब से हम चंपावत बहुत बार जा चुके हैं. हम चंपावत में अलग-अलग लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, सिविल सोसाइटी से, फार्मर्स से, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनसे समझ के लिए कि उनकी समस्या क्या है, और फिर उस समस्या को फिर टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. और वो टेक्नोलॉजीज फिर हमने वहाँ पे एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट की, दिखाई कि, और वहाँ के लोगों ने उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया. जैसे वहाँ के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली वो सॉइल टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल करके देखा कि इसका किस तरीके से वो अपने खेतों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये जब सब कुछ हुआ तो हमने we have compiled all this knowledge in form of a technology advisory note. The first two technology advisory notes on agriculture and water were submitted to Honorable CM Sir in June, and that's when we completed the first phase of our project. Later, we started with the forest management and the livelihood phase in the second part, where we are again leveraging again our knowledge of going on the fields, whether Dehradun mein hai, Sukidang in Champawat district. We went to even not just talking to communities, but district officials, civil society organizations like BIF, like your local women self-help groups, everyone. Even when we talk about forest management, we're talking to DFO, we're talking to the forest officials, we're going to different forest areas, not just in Champawat, but हम अल्मोड़ा में भी गए थे, वहाँ के भी कुछ models हमने study किए थे, and Gajendra Pathak ji is here, he'll obviously be talking more about that. But हमने वो भी model study किए, वहाँ के भी innovators को यहाँ पे बुलाया. So ये कुछ different pain points थे हमको, जो समझे कि वहाँ पे ज़मीनी हालात क्या है और क्या उनकी तकलीफ़ें हैं. That we all documented. These were then फिर बाद में, so we will not always know everything about all the subjects. इसीलिए हमने अलग-अलग expert consultations convene की, जहाँ पे World Bank से लेके international organizations, public R&D labs, CSRR, IIP, GB Pant, अल्मोड़ा, अलग-अलग institutions से experts आए, FSI से आए. तो हमने उन सब के भी नॉलेज को गैदर किया, उन सब से कौन सी टेक्नोलॉजीज उनके रेलेवेंट है वो समझे. स्टार्टअप्स से टेक्नोलॉजीज ली, आईआईटी मंडी जैसे आईआईटी के इंस्टीट्यूशंस थे, उनसे भी टेक्नोलॉजीज, उनसे भी सॉल्यूशंस, पॉलिसी. नेगी सर जस्ट मेंशन्ड अबाउट हाउ कम्युनिटी needs to be a partner in policy, in project formation, in project implementation. So in fact, the process that we followed actually makes them part of the process itself, in a form that they are partnering with, not just for giving inputs as to what the problems are, but also what sort of solutions already exist in them and already exist in the labs and other ecosystem. Again,
and I'm like very happy to say this कि हमने सिर्फ frugal technologies नहीं बल्कि artificial intelligence जैसी technologies भी वहाँ पे showcase की, and वो भी वहाँ पे adoption उसका बहुत काफ़ी ज़्यादा था. जब हमने वो टेक्नोलॉजीज़ एंड एक दो एग्जांपल्स में यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे वो टेक्नोलॉजीज़ को हमने शोकेस किया और वहाँ के लोगों में उस टेक्नोलॉजीज़ को लेके एक काफ़ी एडॉप्शन के लिए बहुत एंथुजियाज्म था. So ये एक machine vision था for apiary management. So we actually this technology was actually capturing honeybee movements throughout the day, and then using a machine vision and a AI layer on top of it was actually detecting what is the health of the honeybee. Is the honeybee getting the food or no? Is there any predator coming inside the box? All these things were being monitored, and we actually got a data of over a period of 2 to 3 days of how it was happening, whether they were getting the right kind of food, whether they were getting the food or no in the first place. So these kind of advanced technologies have also been demonstrated in Champavat. This is another example of how a simple technology, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, so यहाँ पे they were making actually पशु आधार cards. So because cow's nose print is a unique thing, so you can actually make Aadhaar cards out of it, and then each cow का health monitoring, उनका vaccination, उनका how much milk is getting generated, everything can be tracked on a blockchain, which will then enable the communities to also monetize these. स्याही हल तो गजेंद्र पाठक जी है, वो यहाँ पे demonstrate करेंगे, but the idea that I wanted to leave all was that whether it is emerging technology or frugal technology, we went on the ground, we spent time on the ground talking to all the stakeholders, understanding their problems, and suggesting technological solutions, also policy imperatives for the same, and then compiling everything into an advisory and presenting it. And हमने ये आदर्श चंपावत में करके दिखाया सिर्फ एक exemplar site के रूप में, but इसका implication is for the whole of Uttarakhand and for the entire Indian Himalayan region. क्योंकि जिस तरीके से हमने problem statements frame किए, जिस तरीके से हमने problems को समझा और technological solutions suggest किए, it can have relevance in Ladakh, it can have relevance in Arunachal Pradesh, it can have relevance in Jammu and Kashmir. So we in fact want different states to adopt some of this advisory, not just for scaling up in Uttarakhand, but also scaling up in the entire Himalayan region. That's what our goal is, and that's what we set out to do. For the largest student community here, this was also our way to sort of present to you, and Adhikariji mentioned this, that there are multiple ways and there are multiple models in which government works for the community, for the society at large, and you can also participate in this through your own innovations or seeing these innovations and see how you can play a part in this to have a positive impact for the society. So that is it from our side. Thank you. Yes. हेलो, मैं यू कॉस्ट के महानिदेशक और इस कांग्रेस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एंड साइंस के डायरेक्टर और को श्री दुर्गेश पंत जी को इस मंच पे आमंत्रित करता हूं ताकि वो ये जो डॉक्यूमेंट वो रिलीज़ करने जा रहे हैं वो काइंडली उनको हैंड ओवर करेंगे. साइंस एंड टेक्निकल कमिटी के चेयरपर्सन.
Well, good afternoon to you all. See, this TAN is important, and especially with regard to a model that is being created. Uh, this Champawat model this is one of the districts of this Himalayan states out of 13 districts. And it has been identified as it's a very unique combination. There are 9 districts; those fall in typical hill terrains, and 2 are there in plain regions, plain areas, and 2 are in semi-mountainous and plain regions. So Champawat typically falls in plains as well as hilly terrain. And at the same time, all these issues, like since morning we have been deliberating for the last 2 days, issues with regard to accessibility, with regard to availability, with regard to livelihood issues, with regard to migration issues, all those issues are there. And also with regard to technology adoption and this appropriate technology. So for that, this Principal Scientific Advisors Office, Government of India, Prime Ministers, and they have not only assisted local community with regard to all these technologies, but they have come up with solutions. They are also demonstrating solutions. So, and also conducting workshops there. So it's an outcome of all those initiatives. So round of applause to this wonderful team of PSA Office, Government of India. Thank you very much for this initiative. Thank you very much. Thank you very much, Professor Panji. Now, second part of the context setting would be a keynote address by Dr. Rajan Kotruji. Over to Rajan Kotru. Thank you. Good afternoon and namaste. Before I start, on behalf of Integrated Mountain Initiative, I think my presentation would like to make 2 statements, first of all. The first statement is, if we manage our non-climatic factors, that is policy, institutions, governance, appropriately, we are almost making a quantum leap towards managing climate-oriented disasters. That is the first statement as a conviction. Second, climate change scenario as it is building in the Himalayas will have its impact. It will test our skills, knowledge, and commitment to the hilt. It will really matter how different stakeholders come together to innovate. For innovation, you need collaboration, as is one of the motto of this big Congress. But important thing is, whichever innovation you come up with, like the previous presentation, you need to really convey it to the audience of Himalayan farmers and Himalayan stakeholders, whichever are there, in a very simple narrative, adaptable way, action-oriented way. If that doesn't happen, we have several models which have been tested in the last 50, 60 years, and most of them have really survived only the project phase. So I think I have to be very critical because I've been working myself since 40 years in Himalayas. Now let me go further. My presentation will be very short because normally I tend to talk a lot, but nevertheless, it will be rallying around these 4 points. We have to set the Himalayan perspective. Why it is important? Because Himalayas are different. We have heard really a very esteemed set of scientists and professionals in the forenoon session, and I'm convinced that also we have got good messages from them. Himalayas are different, not that you don't know it, but I just wanted to highlight we have a climate complexity. If you see the Western Himalayas, not only the southeast monsoon hits us like it hit Himachal Pradesh this year. It is also the winter, western disturbances when it comes in the form of snow,
then you know what happens right from J&K up to Uttarakhand. So you have to really see that there's a climate complexity. So we have winter disasters, and we have summer disasters. Second, it was talked a lot in the forenoon session, the seismicity of this particular area due to geological faculty. Yes, that is known, but nevertheless, it really challenges us to have our investments very well thought and also implemented very well. So that is often a problem. But I think I would like to highlight one very important aspect, which is multi-dimensional vulnerability of Himalayan landscape, both in upstream as well as downstream. So we are not only talking about earthquakes and cloudbursts, and then also, the aid doesn't reach in time, and all these things are there. So therefore, it's not only climatic challenges which we have also non-climatic challenges here. And later I will show you on the basis of data, which is hitting us also in several parts of Himalayas. Last but not least, who is left in the villages of Himalaya? Maybe northeast looks different, but the western Himalayas, you will mostly find women and senior citizens. So therefore, any investment you make has to hit some big problem and big rider that you don't have people who can actually manage and take up your innovation. That becomes a very big issue in these areas. And with the migration of people downwards, also the traditional knowledge, which we were talking about in the forenoon session, that is also getting lost. And today you will find very, very difficult time to find a local good carpenter who knows how to make a local architecturally sound house. You won't find it. In Kangra or Kullu, you won't find it, because all the carpenters and plumbers have come from outside, and they are making our houses, which are not basically indigenized. They are not really landscape-oriented. Let me go forward. Now, when we talk about non-climatic factors, which I said in my first statement, the landscape degradation is the first thing. You heard Mr. Mehraj, who said in the forenoon session, the Himalayan landscape has become impervious. Why it has become impervious? Because if forest fires are raising all the times between now January, February, up to June, if monsoon is delayed, then most of your upper soil in the forest areas is finished. And the upper soil is the sponge of any ecosystem. It sucks water, brings it down to the geological formations which are there. So that is not there. So you have problems with drying up springs, and you say, okay, we have a disaster of water now. So if there's a forest fire, we have a disaster, the wildlife dies, the biodiversity goes away. So you have another disaster because you have livelihood security, which is dependent on this biodiversity. So I think that's what I really want to highlight, that our forest lands and rangelands, which in a way, you see more data, more than 70% of the land in the Hindu Kush Himalaya is combined forest and rangeland. And most of the rangelands are in the alpine area. That needs no secret. But we know that invasive species are going there. We have a lot of problem with overgrazing, and our biodiversity we are gradually losing. And not forgetting, the forests are the cradle for biodiversity. Rangelands are cradle for the biodiversity in the Himalayas. And you will also agree when I say 36 bio-hotspots, out of that 4 are in the Himalayan region. And out of the 8 vegetation centers, 3 are in India, and out of that, Western Himalaya is one of the vegetation centers. So that gives you some framework what I'm talking about. Second, our agriculture, which is in a way anything between 10 and 15% of our area in Indian Himalayas, even sometimes even lesser in some of the areas, it is gradually getting lost in terms of there's a land conversion on a daily basis. The picture you are seeing on the right-hand side is just a few yards away from my home in Palampur, where there was a full agriculture place. It is now a car washing center, half of it. So because that's what people are doing, they are finding new ways of becoming resilient, economic resilience, social resilience. They have to do it. So they are silently converting their land into different land use. So you are actually landing that perviousness of the landscape because something else is there. That's why our urban centers are basically a kind of a conglomeration of plaster of Paris and cement. That is what is happening to the Himalayas, and our agriculture land is getting lost on everyday basis. I'll give you an example. Himachal in 2010 had a bumper crop of apple, and they had to almost
export 5 crores of apple boxes. And today, after the catastrophe, which we had in 2023, we are talking about 1.25 crore up to 1.78 crore of apple boxes coming out of Himachal. It's a very simple data, but that gives you the dimension. Actually, the production systems are getting down. They are getting affected by not only climatic factors, but also the way we manage our ecosystem, forests, agriculture, horticulture, that is challenging us. And last but not least, most of our agricultural land is now being converted into horticulture. So that is a big danger, because that's danger for livelihood security of the local people, their food security, nutrition security. That has to be kept in view. With this, we come to water. The picture you are seeing, it is just 1 week after monsoon was finished. It is Bias River near Alampur in Himachal Pradesh. No water left. Virtually, you see almost like a small rivulet which is there. And the same Bias, just 1 week before, was raging with, flood-like situation, because most of the water which comes in monsoon also flows very quickly. Our ecosystems are not there ready to really take this water which comes from the monsoon or during the winter to really take it into the system. Most of it gets lost in the form of flood, flash flood, and then you have problems with sedimentation, casualties, washing of our land, soil erosion, everything is there. So we have a supply and demand stress in our area. So that is also creating a new situation in such, some of the areas, because commercialization is happening in a big way. The need of water by the industry, by the farmers, and by household consumption, but also pollution. Wherever you go in the Himalayas, you have waste. Every Himachal High Court recently ordered all the rivers had to be freed from waste centers. All the waste of the main Shimla, Mussoorie, that goes finally into the river, almost like 60–70%. I don't have data, but I have data from my own Himachal area. So that gives you a situation, what is happening in the landscape. Socio-cultural degradation. Our esteemed MLA in the morning, Mr. Chauhan, Munna Singh Chauhan, said that don't give up the traditional knowledge. Don't write it off. When you are talking about big scientific messages which you are giving on everything, so that means our traditional knowledge systems are getting weakened. So that is the knowledge which was there, how to counter, for instance, a drought-like situation, which is a climate disaster. So people are not there because we have changing lifestyles. If you see our lifestyle now, also partly in the mountains, it's like ye dil mange more, as we say sometimes. And if you talk about the tourism, the most of tourists which come to Himalayas, again, I would really quote the data. Niti Aayog data says 55 million is the population of Indian Himalayan region. The number of tourists which comes to Himalayas is around 100 million people, so it's double. All the vision documents of 12 states, right from Nagaland, Mizoram, up to J&K, Himachal, Uttarakhand, they talk about to have 270 million tourists in 2025. So you know what is happening to the landscapes. So actually we are predestined for disaster. So therefore, that needs to be said. There's a changing demography because all our, as I said, our villages are women-headed households, almost like, or some old person is there. Migration of youth, so that means you are losing the creativity, you are losing the energy of youth to be part of the ecosystem, which is the Himalayan ecosystem, and develop it on a conservation and development model. Now, socio-economic dilemma, we don't have a mountain policy in India. So that is the crux. We have to think Himalaya in a different way. It's a good news that this particular university, in the morning it was said that there will be a Himalayan center. That's a very good thing to have, but we have a mountain policy dilemma. We don't have this, and all the states are simply implementing programs which were created in Delhi for the plains of India, so they don't fit into Himalayan landscape. So we have a disaster in the making. It was quoted, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, but come with me and I'll show you how such roads are really built. We blast the road, we then don't look into if we have to really stabilize the banks which we have created and the banquets of that particular river or particular road. So that is a big issue,
disaster in the making. For instance, landslide. So that is something which we have to really look into. We need economic models which suit our Himalayan region. We also need infrastructure investment models. I always talk about green investments which have to get into Himalayas. We can't expect 4-lane roads everywhere. What cannot be done, especially if we are not able to manage. So every mountain range in the world is fragile, but they are managing it in a different way. Alps are also fragile, but they are managing it very properly. They won't make a 4-lane road somewhere, like we do. So I think that needs some kind of a rethinking at a policy level. We will have a discussion. And of course, energy models. We have to really see that our landscape remains healthy. And it's not only about by burning the firewood and fuel wood somewhere, but also if we now get into solar energy, wind energy, and then wood chip energy, everything is possible. So we have to really see that we reduce the mitigation part in the Himalayan region. So in the crux, you get a climate crisis, and we are vulnerable traditionally now for the climate change related impacts. And I only wanted to talk about that climate resilience in the Himalayan region is getting weakened, and we are still preparing for disasters because our awareness and preparedness is really very, very in the beginning. And that particular model of development, conservation and development model in the Himalayas, which acts as a preventive, which acts as a proactive approach towards meeting the climate disaster, is still not there. That's why Himachal would not happen. But that's going to be business as usual. Let's be geared up for more disasters to come. And that has really questioned the landscape welfare in our region. And last is point in the landscape welfare is there's a gradual disintegration of social collectivism and local institutions. We are not really that strong as we were 40 or 50 years back. Today, you have to really, our lives also in the villages have become very, very individualistic. And panchayats are really struggling to get even quorum together in the first time. So you can imagine if they have to take a decision towards a disaster management, the quorum is not complete, and then you are rushing for the next meeting and all that. So this is the last slide. I've taken more time, but I think that's why this session was conducted. We have to really look dominantly into nature-based solutions, and Himalayas provide you that. It is rich in forest areas, it is rich in rangelands, it is rich in subsistence agriculture, which originally was an agroforestry model, as was said also in the morning by esteemed MLA, saying that the farmers created terraces, but they also planted these terraces with trees and grass species to ensure that not any soil is eroded. So I think that is to be taken care. But nature-based solutions, we are still figuring out what it is, but it's virtually old wine in new bottles. It's nothing new. We want to be cost-effective because funds often get a problem, and we want to have less carbon footprint in this region. Second, we have to simultaneously think about environmental, social, and economic benefits for our local people. Last but not least, if we do that, it helps to build our resilience. So therefore, we have to act within the nature, but understanding what already was done on a natural basis, natural farming, organic farming, how we gradually transform our ecosystems towards that, so that we have very good flow of ecosystem services, water, biodiversity, wildlife, to ensure that Himalaya remains a landscape where upstream as well as downstream enjoy the benefits of the ecosystem services, not only support ecosystem services and provisioning, but also spirituality, because Himalaya is the cradle of Indian spirituality. Thank you very much for your kind attention. Audible? Thank you very much, Dr. Rajan Kotru, to give such a wide perspective on the issues and the complexities. Two things which come to my notice are that the changes in Himalayas, your economy is changing, demography is changing, consequent impact on the soil and landscape. That's very vital. And the second is little hard-hitting question which come to us, whether the development in Himalayas is for the people of Himalayas. We are talking of grassroots. So can the development be oriented
that it supplements the welfare of people here and doesn't really cause any damage. So with that, what I could get, and you have heard, we could have two questions from the audience to Dr. Kotru. One from, somebody wants to raise a question? Well, yes. I hope you're an activist or a student. Yes, please. Mic hai? Your name and institution. I will read your name then. Mr. From? Okay. You will have to ask. This is Quite different. that is by different. Yes, your question. Yeah, good afternoon, sir. I am Vaibhav Garola from BBA second year. Basically, I am from Tiri Gadwal, local resident. I am currently studying over here. And my question is, while focusing on this project and while the teams are going to that place, is regional language being used with the people during these projects? Anyway, well, it's a question of communication. Yeah, it is a communication question. Language and Communication. I think maybe it is for the first presentation because he presented project. I didn't the present. first presentation, this question? No, sir, it is a general question. General question. Yes, sir. Okay. So I think he is executing the project. Happy to answer that. Yes, of course, not just the regional language, but also people in the team. So one of the team members was actually from Pithoragarh. So she understood the context better. She understood the people's sentiments better. She understood the way to talk to the local people. So that really helps. And the other aspect, the reason why when we are coming from different parts of the country, but the reason why we are working with UCOST and the reason why we are working with the district administration is so that these aspects can be taken care. So when we work, when we're working with the UCOST team and the locals and the local support there with the district administration from the collector office, they were helping us bridge that gap of the language, of the way the sort of problems are there, and of how we understand these better so that we can provide right solutions. So what you said is perfectly right. Yes, it's an important aspect, but it's not just the language, but all the aspects of it. You know, you also have to understand the sensitivities of that particular region. I understand, having traveled in Uttarakhand in the last 1 year, I understand these are different in Kumaon and they're different in Garhwal. So some of the local, as I said, it's very important, and we do tend to take care of it as much as possible, whether it's the language, whether it's their problems, whether it's their cultural sensitivities, or whether is there any other problems which are very specific to them. So we do take care of that. Sir, actually, is it I think only one question we can have next. And any other question? Thank you. Somebody else? Oh, yes, madam, from that side. Yes, please. You have a mic with you? Please give the mic. Only with the mic then. Yeah. Yes. Good afternoon. I just wanted to ask, how would you place collaborating with educational institutions in a given area to promote grassroots and community level development? Because I feel that if we start from the children, trying to teach adults and making them understand the issues, it also becomes easier if they grow with it because they see daily issues and daily problems. How would you think is it going to help, sir? थैंक यू वेरी मच मैम. आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है. इसमें दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ ये है कि आप कुरिकुलम को चेंज करके और बच्चों को कस्टमाइज़ कर देंगे ऑलरेडी स्कूल में, हाई स्कूल लेवल तक ही, कि ग्रास रूट का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, व्हाट इज़ दैट, और उसके लिए उनको तैयार करना है. बट व्हाट हैपन्स इज सेकंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. While already at the high school or within the high school, you must ensure that the children get an exposure
to the rural areas. It gets an exposure to a very, ab Dehradun mein hai, jahan pe bhi hain, the nearby village or panchayat, better take them there. That's why, some countries are ahead of us because we're always shy of taking our children and showing them what our community is, how it works. So don't shy, don't wait till college time. You have to catch them young. That is very important. Whether it's waste management, it's water security, you have to catch them young. You have to, when they are between 6 and 10, please catch them then. Both way, you will get success. Thank you very much. With that, we have an end of the session. Dr. Rawat, now you take over. Thank you very much, all the speakers and both Mr. Patil and Dr. Kotru. And now we move on to next session. That will be the 4 thematic area panel discussions. And I thank Adhikari ji and team from PSA to kindly take the seats. Now we will invite the next group of people under the GLOF and the flash flood. We'll have a speaker, panelist from Ladakh, Sri Jigmet Takpa. Kindly, Takpa sahab, kindly come on the dais. Sri Takpa is the former PCCF of Ladakh, and he has had a long innings in Ladakh as well as in the Ministry of Environment and the Forest, Government of India. He is one panelist, and we had a thought that from Uttarakhand se bhi udhar Chamoli, Joshimath area se ये भगवान सिंह राणा जी आने वाले थे, वो आए हैं क्या राणा जी? वो नहीं आए हैं. और actually from Sikkim Darjeeling area there is a in absentia presentation हमारे पास आया है, पर हम उसको इस समय शायद presentation नहीं दे पाएंगे, but we will just to show the recommendations ताकि हम बाद में discussion में ले आएंगे. So anybody from Uttarakhand who would like to talk about GLOF, यहाँ पे जो invited speakers हैं, कोई GLOF के बारे में जोशीमठ या फिर और anyone would like to talk about GLOF, तो वो आ सकते हैं यहाँ पे panelist की तरह. And if any other region is being represented, that is fine. Otherwise, we can now go ahead with the presentation by Takpa Sahab, and then there can be a question-answer session. So, because under this group, I thought there will be more presentations, but Takpa Sahab. Yeah. Distinguished panelists and dear friends, it's a big honor for me to be to be invited for this World Congress for Disaster Risk Reduction, Disaster Management, and I thank Government of Uttarakhand and all the organizers for organizing such an important conference, especially on disaster, and which has affected the most fragile region of the world, that is Himalaya. I'll be speaking about my experience in disaster management in Ladakh. And in 2010, in August 5th and 6th, there was a flash flood in Ladakh. And it was such a downpour and rainfall that we had never seen in Ladakh. And I was in my home in the night, and I could hear a river flowing outside my house. And everything went away. There was no electricity, there was no communication, but one of my cell phone rang at 3 o'clock from Jammu saying that one of their friends, that the ex-DC saying that their friend, we had one friend, that was called, his name was Badal. In CRP, their complete cantonment was washed out. They said, please, Takpa, go there
everything is lost, you just go and try to rescue them. So I went from my home with my gypsy, and I have to cross one stream. That bridge was gone. I tried with the second bridge, it was also gone. It was such a big flood which was in the river. So I tried another river bridge. It's a very high bridge by army. So I was able to cross. Just I landed near the flash flood side. I was caught by the minister, that Mr. Rigzin Jora. Said, "Bhai Takpa, there's a big flood, there's a big damage to Ladakh. You are the relief coordinator. You are the relief commissioner. जो बंदा मर गया है उसको अलग करो, जो बच गया है उसको करना है. You have to take care of now, because there was nothing, there was no communication, there was no people. So I was given the whole charge of as a relief commissioner and rehabilitation of Ladakh that very night. So I rushed to the deputy commissioner office and tried to install the communication, other things, and the order was issued for me as a relief commissioner for the disaster risk reduction, what called the rehabilitation and rescue. So everything was put on my head. I had no contacts. I called all my office people and established a command center in the conference hall, and that was I shifted my office. I had two offices. One was Renewable Energy Development Agency of Ladakh, and secondly was of my Department of Forest and Wildlife. I called all my office people in this command center and established communication, established the communication, and appointed a core team of my own office. So after that, then I established regional offices in different regions, headed by SDMs, and in each village where were affected, the number that was made the head of the relief coordination in each village which was affected. So all the orders were issued by communication through wireless. There was no telephone. Everything telephone, and the hospital was washed out. There was a thing, the two critical part which was washed out. So now it was very, very difficult for everything to be coordinated. So what I did was first and foremost, you must know what is the situation. Therefore, we did a very rapid survey to understand the damage caused to the infrastructure, to villages and agriculture, human being, everything we did. Within 2 days, I had all the data from each and every places. We used the coordination with army, paramilitary forces, used the communication from the Air Force, and everywhere we used the infrastructure to get the information. Within 2 days, we had all the information of the damage caused. It was a heavy damage, and in this cloud burst, one of the heaviest loss was to Ladakh was about 234 human life was, was killed, and 800 people was heavily damaged. So more than 50 villages, 40 census villages, 50 hamlets, they were damaged, severely hit by the flash flood, and some were partially affected, some were substantially affected, and few villages in Leh as well as in one of the nearby village that is called Sabu and Choklamsa, they were heavily affected. So what was the important part was to, after getting all the information, I had within 2 days, can't believe that after that Revenue Authority did an extensive survey, they came with the same figure. After a year, almost 6 months to a year, they got the information. My data was almost same. So what we did was, without any training of disaster management or any protocol or is required, it was all instinct, it was all initiative, and most important thing was, it was a coordination with so many different agencies. So we were able to mitigate the effect of the disaster, and we collaborated with all the army, Indian Army, state government, CRPF, ITBP,
civil society organization. It was a collaborative effort, and so many NGOs which came to help Ladakh, not only from the area, but throughout the country, people help it out. And not only India, there were so many relief and support that we got from international agency. So to coordinate all these things, we had to, have our command center. And if you have seen that anywhere a relief commissioner is, appointed, after the relief commissioner, everything is done, and it is always the relief commissioner is always hanged, because during the emergency, nothing is kept, on record. You have to issue everything, whether it is funds, whether it is, equipment, infrastructure, everything you have to do without any information. If required in some place, it's an emergency, no formality, immediately issue. So that is the thing. But here what I did was I knew that I will be hanged. Therefore, I kept all the records of everything, every item issued to any place to make it very transparent. All the information is on recorded. So that was the thing that being a government officer, I knew that it is very important to have records. So another important thing is that we got so much of help from the various organizations, especially from the Air Force, because Ladakh is known for trekking. So many people has gone for trekking, and they were stuck in many places. So we had to rescue them and also rehabilitate them and give them medicine, food, water, clothing, everything we have to provide. So it was done through Indian Air Force, Indian Army, paramilitary forces. Believe how you could one person run around. I went to the army saying that I required immediate. See, I had all the commodities. Now I have to feed the people. Almost more than 50, 60,000 people are there first you have to have a relief camp. You have to establish relief camp in each and every places. Second thing is that you have to put a ration and food for them. How you could do? I have this public distribution system. I got rice and dal and everything. Who will cook it? You can't cook it. I took all the material to the army langar and got all the things packed and cooked and got it distributed. So it is such a difficult thing because you have everything, but you can't do it yourself. So you have to have a coordination with all the organization which help it out. You can see that we established relief camp. I don't have the actual pictures. We had a big relief camp, almost all the places. In Leh itself, I had 8 to 10 relief camp. In all other villages, we had relief camp. It was issued and distributed through Air Force and trucks and things. So therefore, that within a day, we were ready. The day it was that flash flood had come to Leh, in the evening, I was getting the relief material for them, sleeping bags and kambals and everything. But the thing is that time it was again, waiting. We were waiting for, on the road. It was feared that another flash flood will come, but we have to endure. I was with my own officers. We endured and got all the relief material and put it everywhere. Relief camp was done within the same day. And such a incident that, we did it, it was all through your instinct only, but later on we came to know that this is the waste framework, this is the scientific way that we have to go around. It was in almost same as the relief coordination framework of SDA, NDMA or other organization they follow. That was done only through instinct. So next part was to restore all the infrastructure, whether it was road, whether it was communication, whether there were bridges. So within 2 months, this all infrastructure was completely restored. And that initially, the chief minister at that time, Mr. I forgot his name, Abdullah, Omar Abdullah. He came that, so such a, state of the affair. After 2 months, he couldn't believe that how could, make everything functional again. At the airport, I met one German lady. So
she saw all the relief and rehabilitation done in Leh. When I introduced myself to her, she said, with all our technology and our technological prowess or funds and the infrastructure we have in Germany, we could never think that such a relief could be done in our country. It will take at least 2-3 years, he said, what you have done within 2 months. So this is another important thing is what inclusive means. Everybody in the community worked to restore, rehabilitate, and reconstruct the damages done. So you can just see, just after the day when it was a disaster struck in Ladakh, everybody from the community came as a solidarity for those who had died and resolved to restore and rehabilitate whole Ladakh again in the same state. Another important thing is that so many foreign tourists which were stuck in Ladakh, they came to restore. They worked day in and day out like a labor voluntarily and helped Ladakh, rehabilitating and restoring after the disaster. And before the onset of winter, we had almost houses built for the people. Initially, it was prefab structures. We had locally made what called architecture with bricks and things. And what we did was, it was a very swift action that which operated, and it saved a lot of life. And another thing is that all the infrastructure was restored to normalcy, and it has empowered the people and the community. And most important thing is that I would say it was the community which has really, helped in restoring the damage done by the flash flood in Ladakh. And other thing is that it was the effective coordination and timely action that has saved the people. And what we did was, for the disaster management strategies, we used 3 main steps. First was response, rescue, and relief operation. Second was, most important thing during the disaster, it is the mass casualty, how you manage it. Those who are killed, you have to be identified. It has to be handed over to the places where it is from. If it's a labor is from some very different state, we have to hand over all the dead bodies to the kith and kin. There is a big operation, and to those who has injured, that has to be rehabilitated. Another thing is rehabilitation of the infrastructure for house and what called communication, and restore the infrastructure that is damaged. That was done in a very record time. Sir, what lesson we learned, after all the operation that we done, was that we need to have a disaster management and disaster preparedness plan. We didn't have any plan, nothing. It was just an ad hoc arrangement that we did, and we learned the lessons. And we, in Ladakh, we have a disaster management plan for Ladakh now, based on all the experience we have gained. Second thing is that most important thing is the communication. If you have a communication, you know what is required at what place. So most important thing is that we have to have a communication, not one, different kind. We have to have the called telephone, the landline, mobile, as well as wireless. Because during our disaster in Ladakh, BSNL main station office was washed out, So that was the main link to all the places. So we use all this mobile handsets, and Airtel worked in only Leh area. That rest everything we did through wireless. After that, then we could restore the communication. That was important. Third thing is that we need to have a good hospital and administrative in mass casualty management. Second thing is that another important is a quick response team. When there is what called disaster, the team must come to a place, have an office,
establish his what called headquarter or the command center and work it. Otherwise, it was an ad hoc arrangement at that point of time. And we need to strengthen the health system in the vulnerable area and emphasize the multidisciplinary nature of the disaster management. To understand disaster management, it is not a simple one way, one sector. It is a multi-sectoral, multicultural, organization work that everybody has to work together. Only then it could be successful. And most important thing is that community involvement. Lesson unlearned. Disaster in the mountain area, especially the Himalaya, I say 90% or 99% of the disaster are not the natural, is man-made. You cannot believe that the disaster that struck Ladakh was man-made, mainly because we have traditional houses made of mud bricks. We have traditional villages on the slopes. It was not at all affected. Which was mainly affected was all the people who has come to Leh or the around Leh, and they have encroached into the waterways, dry waterways or the dry glacial channels, which was prone to disaster. So on this area, the disaster was the maximum in that area. None of the traditional house or traditional villages was damaged. If you see, this is a monastery on the top of a hillock, is completely clay. It is for almost hundreds of year old monastery. Nothing has happened to it. Another thing, this is called Mani wall. This is just like a dam or the wall to obstruct the flow of the flood. So this Mani wall is used both for physical as well as Mani is to have so that people don't damage it. It is have a religious significance, and it signifies that no person should go beyond the Mani wall to construct anything. But during now, at this point of time, all this traditional knowledge is not at all being used, and people are encroaching in area which is prone to disaster. So therefore, these people has been affected, and after that, these people are rehabilitated and placed in other safe area. Still, all this Nala has again been encroached. So it is a conclusion that what we need to do, have a effective coordinated effort for disaster management. And relief and rehabilitation effort is the commitment of the community which can rebuild. And the most important thing that we need to be prepared for disaster, and once it strikes, if we have prepared for it, we can manage it well. Thank you so much. Thank you very much, Takpa Sahab. It was very, very powerful and a very, thought-provoking lecture. By the way, Sri Takpa also happens to be the Vice President of Integrated Mountain Initiative. Now, we are honored to have with us one very senior professional from ICIMOD. One very senior professional from ICIMOD, International Center for Integrated Mountain Initiative, ICIMOD, Dr. Arun Bhaktashrestha, who is a specialist on Himalayan glaciers, GLOF, and so many other aspects. He is a senior regional program manager. Kindly, Dr. Shrestha, you are invited to dais for sharing your experiences. Because you bring in experience from the entire Hindu Kush Himalaya region, not only from India. So over to you, Dr. Shrestha. Respected Chair, Dr. Rao, thank you very much for accommodating me. I was not scheduled to talk here.
so I have not prepared a formal presentation. So if you find it a bit erratic and unstructured, please do accept it as it is. Thanks for the introduction. I am Arun Shrestha, and I lead a group called Reducing Climate and Environmental Risk at ICIMOD. And in current and previously, we have been working quite a lot on issues related to glaciers, its change, its dynamics, and impacts. So I would like to share a little bit of thought on those topics. So as was mentioned even in the morning, and my DG also mentioned about the scenario here, is that the cryosphere is changing quite dramatically. And there are different projections. And one projection which is, at 2 degree end of the century warming scenario, the Hindu Kush Himalayan glacier will reduce by about 30 to 50% by the end of the scenario with respect to 2020. And we know even 2 degree scenario is very ambitious. So the glaciers are bound to change, which means glacier lakes are bound to increase, form, and outbursts are inevitable, as there was also a presentation. Now we have been mapping those lakes in form of monitoring so that some preventive measures could be done. And somewhat like more than 200 glacier lakes have been identified as potentially dangerous, which could burst out anytime, right? But then what is also clear is that not all dangerous glacier lakes can be mapped. There are so many GLOF events happening, the glacier lake outburst floods happening, from lakes which have not been identified as dangerous. So while in one hand we can keep track of those dangerous lakes, we also need to keep track of something which we do not know. That's a problem, right? And here comes the role of local level engagement. For those small scale, frequently bursting lakes, I think we have to work not only with scientific techniques, but also with communities. And we have some good experience from Karakoram on what we call the Community Glacier Watch, which is as simple as community volunteering to go to the glaciers, the glacier lakes, and keeping watch of it. And then if there is some change, informing the settlements down there. Now, it could be enhanced by certain technologies like cameras and things like that. There is no limit to that, but starting from community watch is also very important. Now, other spectrum of this problem is transboundary floods, right? And we also work quite a lot on transboundary floods because a lot of time GLOF events happen and cross international borders. So I think information sharing, joint monitoring, and also working towards transboundary early warning system is very, very important. That's, I would like to make another point. The second is the risk factor now. It's not only the hazard factor, but the risk factor is very much increasing with increasing settlements. And as Dr. Takpa said, it is along the river bank, more and more settlements are coming. And not only settlements, other types of infrastructures are being built, roads and larger roads, wider and wider roads and infrastructure. The risk factor is increasing. So what is the way out? I think that is very important. We cannot stop development, but we cannot let the development, progress in the way it is progressing, right? So there has to be a balance. And one area we are working on is sustainable infrastructure. And here, particularly sustainable hydropower. And here I would like to mention 4 areas of sustainability related to infrastructure. Of course, technical and financial sustainability has to be there. But what is important, I would like to mention, is environmental sustainability and social sustainability.
I think these are very important. And if we consider those factors, I think we can make infrastructure sustainable and resilient and to work with environment. I think that's another point I would like to make. The other thing I would like to make is the hazard, in terms of hazard landscape, new forms of hazards are emerging. We talked about extreme rainfall in high altitude, where it used to be quite arid. I think that is another thing we are experiencing. The other very important related to cryosphere is permafrost decline. I think we have not talked about it. Permafrost decline is happening quite rapidly, and this is one area where we have not ventured so much in terms of scientific knowledge development. But it seems like, I will add, quote unquote, it seems like more and more disasters are related to permafrost decline. I think the Chamoli disaster can be attributed in some way to permafrost. And also the Sikkim disaster, recent one, in some way to permafrost, I think. So this is an area where we really need to generate some level of understanding. To conclude, I would like to say that both the hazard environment and the risk environment is increasing. So unless we try to balance those, I think our path is going to be very difficult. So overall, I would like to stress again, the sustainable development pathway, including all the 4 pillars of sustainability, I think is very important. These are a little bit of ad hoc on structure, submissions from my side. And thank you once again for giving me this floor. Thank you very much. I request you to kindly, for a minute, please stay back in the. Stay back. I think from the organizers' side, there are some mementos for the panelists. From the chairperson to speakers of this GLOF event. If are there some mementos for the? Yeah, I request Sri Negi, chairperson, to kindly honor Sri Jigme Takpa. Please give him big hands. And thank you so much. I also request Mr. Sanit Patil also to come over to dais. I request you to kindly honor Dr. Shrestha. Is Sanit Patil there? Or anyone of the team members? Yes. Dr. Shrestha, thank you very much for your sharing, for your wonderful experiences. And I request you to kindly hand over to PSA team, Mr. Patra. Thank you. Thank you. Thank you so much. And would you like to say? Hello. Now it's fine. Well, 2 presenters. Dr. Takpa, he emphasized on the community and the government together, collaboration. That is what the voices of people and voices from the government both. And Dr. Chetri, he mentioned very politely, a very, very wise message to all of us. Development will have to be environmentally sustainable, whether it is hydropower, as a road infrastructure, or development of cities. So that is a caution. Do we really need development at the cost of environment? If we are doing that, then disasters we are inviting. Thank you very much. I think you will have a lot of questions, but then because of paucity of time, we can have questions deferred. Yes, I think Dr. Rawat to go on. Participants can write down the questions and hand over to Dr. Naveen Joshi.
if there are, and if there are comments and suggestions. Now, I thank Shri Takpa and Shrishta ji to kindly, take the floor. And next batch of panelists, I do not know how many of them are here, but we had kept a group on landslides and extreme weather events. If there are people who would like to talk from Uttarakhand से कोई इसके बारे में landslides और उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, landslides and other problems from Arunachal Pradesh, Mizoram, Himachal Pradesh, Uttarakhand. If not, then we move on to community resilience and adaptation. From J&K, we had Miss Beg was here. I think she is not here. Yeah. And then from Sikkim, Miss Lepcha, she is here. Please come and take the dais seat. And from Arunachal Pradesh, Dr. Bhatt, kindly come over to dais. From Mizoram, Dr. Laldin Puya, please come over. And any other उत्तराखंड से बिष्ट जी आप आना चाहेंगे प्लीज़ आप आइए और अपने एक्सपीरियंसेस अपने भी एंड वॉट एवर एक्सपीरियंसेस बट बिकॉज ग्रुप हमने पहले बनाए थे बट वो ग्रुप्स शायद बहुत नहीं बन पाए बहुत क्लियरली तो और कोई उत्तराखंड से और कोई फॉरेस्ट फायर्स पे या फिर किसी पे एंड ऑफ कोर्स मिस्टर गर्बियाल यू कैन आल्सो कम ओवर. And so we would, because we have to finish this session by 6 o'clock, 6 बजे तक हमको ख़त्म करना है, तो हम लोग we will go, yes. Okay. हाँ आप आइए हाँ. So we have one more gentleman from Uttarakhand who has coordinated Kedarnath disaster also. So हाँ किशोर चौहान जी आप भी बोलना चाहेंगे उत्तराखंड के ये किस बारे में आप बोलना चाहेंगे लैंडस्लाइड्स पे ओके तो आप भी आ जाइए यहाँ पे. Then we will have last में community resilience से मिस मल्लिका विरदी भी हैं वो भी काइंडली आप भी आ जाइए क्योंकि इसी में कंबाइन कर लेते हैं इसको. हाँ क्योंकि लास्ट वाला सेशन हम लोग इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन वाला चाह रहे थे तो काइंडली Sikkim then, can they begin, Dr. Rawat? Yes. The Sikkim, they can begin? Yes. Yes, go ahead. Hello, okay. Just introduce yourself and then the presentation. Okay, my name is Mayanveet Lepcha. Now today I'm representing affected citizens of Tista. So good evening everyone, Kamrimo. Today I'm going to talk to you about traditional risk reduction practices and the voices of the roots. Before I do that, please allow me to play a very short Lepcha prayer in the flute retention. This flute retention is to pay obeisance to our ancestors who were closely related to and associated with nature. While this flute plays on, I request everybody in this room to please close your eyes and meditate on Mother Nature, which has sustained and given us so much to humankind, and let's take a pledge to pay back to our Mother Nature.
Okay, this topic is very dear to me because the Lepcha indigenous people to whom I belong worship, revere all forms of nature. The Kongchenchu, the Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, and the river Tista and river Rangit are both regarded as our god. While we practice Buddhism in its most ancient form, we closely associate the mountains and rivers in our daily life. Talking about traditional risk reduction practices and voices of grassroots, the indigenous Lepcha people of Sikkim practices in our daily life is already in the nature of protecting and preserving. Now, may I give you a presentation of my thoughts? So, like, we practice, like, this is like Mokzingding Rumfat. This ritual is a prayers and offering to Mother Nature. The Lepcha worship nature by faith and belief in the greatest philosophy of symbolic relation with nature.
It is a rituals with education in ecology and environment. These rituals are performed when the fresh green buds and leaves are grown. These rituals are done to protect and save from the natural calamities, landslides, floods, famine, and diseases. Okay, and we have this Tendonglo Rumfat. Tendonglo Rumfat is one of the oldest and the most important rituals celebrated in Sikkim and the Darjeeling by the Lepcha tribe. It is a 3 days ritual that begins with prayers to Mount Tendong in Namchi in South Sikkim. Lepcha indigenous tribe believes that Mount Tendong saved Lepcha tribe from the Great Flood. So every year, all the Lepcha tribe gathered and offer thanksgiving to the Mount Tendong for saving our ancestors and also praying for prosperity and wellness to all the human civilization on this earth and pay great respect to the hills. Everyone pray for keeping them safe from all natural disasters and all other natural calamities. Sukyu Rumfat. Sukyu Rumfat is a wealth to the wealth rituals that gives like thanksgiving to ceremony, prayers, and offers to local deities and well deities after the harvesting. In accordance to Lepcha mythology, there is a Lepcha village called Ne Mail Kyong. Ne means holy, Ma means hidden, Yel means eternal, immortal, and Kyong, a village, means a hidden village that is holy and eternal, a paradise on earth, which we believe that this village is in the foothills of Mount Kanchenjunga. Satap Rumfat. Satap means a hail. Satap Rumfat means the prayers and the offerings to the hailstorm deities. This collective ritual is observed to prevent hailstorm destroying the crops, the fruits and vegetables, but there is a deeper meaning regulating the amount of rainfall so it results in good harvest. Since most of the Lepcha indigenous tribes are farmers and their livelihood depends on farming, this ritual is performed in the month of January and February, and all the villagers, they gather together and offer prayers to hailstorm and ask protections and prosperity to all the humankind. These rituals are mostly observed in Zongo area, which is protected for only indigenous Lepcha tribe. Chirim and Lang Rumfat. Chirim, Lang Rumfat. Lang means a land. It's held shortly after Satap Rumfat, before the onset of monsoon rains. It is performed to protect the people and the land from diseases or other kinds of harm. Chu Rumfat. A Chu Rumfat is basically worshipping the snow-clad mountains. A Lepcha indigenous tribe believes that they have been created from pure snowball of Mount Kongchenju, that is Kanchenjunga. This ritual is done to honor the mountain Chu, Konchenju, and all the other mountains range in Sikkim and Darjeeling district. This ritual is performed after the first snowfall in the mountain range. Nesol. Nesol, Ne means very pure and sacred, very sacred. Sikkim is blessed by the land of Gurumbachi. It is a hidden land of treasure. This ritual is done by Buddhist monk. They offer sang, Himalayan juniper, fermented milk, millet, rice flour, sugar, honey, curd, and milk to the local deities to take care of the human beings. Pam Luxor. Pam Luxor is also a ritual in Sikkim celebrated by the Bhutias and the Lepchas, the tribe, every year to pay tribute, honor, and to propagate the protective Mount Kanchenjunga as the guardian deities of Sikkim. This ritual has been performed by the both Lepcha priests and Buddhist monks in all the monasteries in Sikkim. So we have this Lepcha and the art of building earthquake-resistant traditional house, Kaden Moli. Ka means we. Then means where, like, so Kadinmu means, Ka means we, then means where we spent our childhood learning the basic. Mu means center or the main, Li means home or house. So this type of house that we have in Sikkim and Darjeeling is like earthquake resistant house that has been built. So other one is the last is like whenever there is a climate change, and recently in Sikkim, like on 4th of October when we witnessed the flash floods, the glacier lake outburst.
So it was like, we didn't wait it for the NDRF, we didn't wait it for the state authorities, we didn't wait it for the central authorities. It was the indigenous Lepcha tribe, if you see in the pictures, they started, like not saying Sarkar ne ye nahi kiya, wo nahi kiya, but like without thinking a second, the indigenous community came together and they started building our indigenous, this bamboo bridge, and this is like, we need to consider this indigenous knowledge, the traditional knowledge is very important in the times of disaster. So thank you so much. Last, I just want to end my note. So as we hear government all over the world declare and possess a commitment to carbon reduction, sincerity of purpose is not seen in any kind of executive actions. They continue to mess with the rivers and mountains. Sikkim, Himachal, Uttarakhand, recent tragedy speaks eloquent on the lack of sincerity. So therefore, I conclude the voice of the Lepcha indigenous people must be heard. Thank you. Thank you very much. You have your deep faith in nature and very meditative, that flute. Thank you very much. The next speaker may introduce himself and make the presentation a short one. Thank you. Thank you, Chair and Co-Chair and my fellow panelists. My name is Dr. Ladim Puya, Mizoram University. Today I spoke about the role of young Mizo associations on disaster management and environment in Mizoram. So as a life member of YMA, I also would like to express our activities on disaster management and environment in Mizoram. This year you also conduct a general conference at Biate, one of the cleanest village in India. So that's in Mizoram, it is the first, there's a place where YMA General Conference was held this year. And my contents of our presentations are like brief introductions of YMA and brief, I'd like to say about the profile of YMA and activities on environmental issues and activities on disaster management in photograph. That's maybe better what I'm saying. Then the brief introductions, like YMA is the largest non-governmental organization in Mizoram, and it was founded in 15 June 1935 by missionaries. Registered under Society Registration Act as given, and it is non-profit, secular, administered, and function without any indulgence of politics, and mostly working towards humanitarian actions and the welfare of Mizo people. And in YMA, members is 490,601. That is 45% of the total populations of the state. Under this member, 45%, life members are 11,591 members involved in this NGO. There are 820 branches in Mizoram. In the city, 109, outside city, 657 branches are there, and outside the state, 54 branches. And there are 19 committees under Central YMA Committee. So here you can see that there are two important committees, Disaster Management and Science and Environment Committee. And YMA also received an award from Government of India, as mentioned. Here are some activities on YMA on environment. Planting trees, then clearance of the river. Sometimes you help work together, simply called Natlang, that clearing the forest for clearing the roadside and clearing the riverside also. That's a very common practice. And YMA also has MOU with PWD, PHV, and Fisheries Department regarding conservation of forest, ecosystem, and all like the related issues. And now go to disaster management activities. So these are the both
of Central YMA, that NGO. So here that I put the notifications as mentioned by Central YMA regarding that there are 2-3 rivers, big rivers. Along the rivers, John, incidents are very common. So you, Mizo people, search for the dead bodies, so the John persons. So for that purpose, the branch committee, each branch was notified which date will be searching date. That mentioned here like this. Then let us see, Central YMA under subcommittee, so they organized many training regarding disaster response force, and also organized community disaster awareness campaign in many villages. And also practice every year mock drill. Here that in combined nature and amount of activities organized by Central YMA like that. Trainers training conduct 18%, training on disaster response 15%, equipment operator trainer 10%, community awareness campaign 34%. So that Central YMA Young Mizo Association involved many much things in pre-disaster and post-disaster and during disaster too. Here, search and rescue equipment of YMA. So that's a very well equipped by donated by someone and from the state government. And one innovative equipment also implement, that is this one is Huay Lang Lang, that stretcher, that innovative idea by Central YMA leaders. So this one is also published in Disaster and Development Journal this year. And activities YMA in community levels are very much within 15 to 30 minutes. I cannot explain everything. That's some of the activities. Sometimes drugs for drugs abuse. Then sometimes that's up for YMA. There is a supply reduction cell under the Central YMA. So they are searching for the drugs trafficking to stop the drugs abuse and like that. So that activities. And sometimes health facilities and these health like that healthcare systems like that provide during COVID. These are during COVID time. So YMA collect vegetables from village and from the village and collect all the vegetables to the city. So they distribute like that. So each of the household collect like these vegetables. So these are the performed by YMA only. And here is the window that she cannot build her household. So that's YMA construct a building like this in the community. These are some activities of YMA. And sometimes that YMA also involved for infrastructure development along this highway also that involve how to strengthen how to prevent the environment. So YMA also much involved along regarding this. And sometimes work together for the agriculture field. They'll help those who helpless, those who cannot cause that due to that illness or something. So the community participants to clear off the vegetables land like this. So then one of the activities, major activities of YMA in Mizoram is like that prepare the grave. During the any persons dead in the community, so YMA help the persons of the relatives in many ways. So at least 3 nights, you go together to the dead body's house, relative bodies, so you sing a song and like that you try to help them like that. So these are one things of the activities of YMA. And I would like to explain shortly about the landslide so that our chair also said, so very short, I'll take it. That's all from YMA's side. I will take this opportunity to say about the
another one. No, no, no. Which another one? Oh. Okay. Okay, excuse me. I will say about the varieties and landslide. So that's I already delivered these presentations in the technical sessions. I will skip this some part. I would like to one. This one is the landslide, a very recent landslide on June 12, 2023, after monsoon season, during monsoon seasons. So this disturbed the highway National Highway 6, and also damaged Mizoram University bypass road, and also affect main road very recently. That I also work for this one, and here that I also do some analysis, that borehole analysis. Here I would like to say why I will put this one. I'm a academician. So the government asked me to investigate this area and to help DPR, where that's to be submitted to NTMA further. So that's appoint me, the government appoint me like that. There is a good linkage between the government, state government, and academician. That's why I like to say about this. These are LiDAR images, a very sophisticated instrument, and these are the analysis of the landslide. So here is another landslide in the southern part of Mizoram. It is like a Josimat subsidence. That's a big subsidence in the southern part of Mizoram. That's, you can see the cracks observed over there. So you also again asked to investigate this area. So the government requests me, then I investigate for this one. And these are the satellite imageries, and I'm taking analysis. And I would like to say about this role of legislations. So there are many government agents, government officials also. That's why I like to say in short. So there are many landslide issues in Aizawl. Here you can see that. So just due to this many landslide history in Aizawl, so the government tried to reduce the landslide risk. So very recently, I think that in 2017, Aizawl Municipal Corporation Site Development and Slum Education Regulations was implemented very recently, 2021. So under these notifications, how they do, the owner need to hire technical license holder. Technical license holder may be geologist, engineer, or soil engineer, or farm. And site investigation, after site investigation, laboratory investigation, design, and so that recruit geologists and engineer for construction and new building. So for this landslide risk reduction in Mizoram, so that is like that, based on this map, so that perform this, and you also, the geologists do like this, and inspect, supervise during excavations like this. These are very 28 November, I took this photo. That I also inspect, supervise excavation works. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. On two aspects. What is the community aspect since your organization registered in 1935? I think you must be one of the oldest community organizations in India. You must give them credit for that. And the second is how your community wisdom you could bring in the legislation. And you could have then laws where the criticality is mapped. So it's very inspiring for all of us to learn that we map landslide critical areas within the city, and then you could make laws and enforce it. Thank you very much. Okay, thank you. The next one, please. Mr. Chairman, Ms. Lepcha from Sikkim wants to leave because she has to catch a flight for Delhi. Okay. So we would like to give her a memento on behalf of organizers. Sure. So, Ms. Lepcha, please come over and just she alone will honor others for later. Okay.
And there is a memento, and there is a book by Honorable Prime Minister of India, so that will be useful for, yes, yes. Thank you very much. So, and over to Chair. And because we have to cut short time, so each presenter is requested to finish in 4 to 5 minutes, 4-5 minutes. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी हिंदू उत्तराखंड की परंपरा रही है। मंच आसीन सभी विद्वानजनों और वैज्ञानिकों शोधार्थियों को मेरा प्रणाम और सामने बैठे हुए सभी विद्वान श्रोताओं को मैं नमन और प्रणाम करते हुए आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है मैं इसमें वनाग्नि पे कुछ बात करूँगा, क्योंकि मैं वन पंचायत सरपंच होने के नाते वनाग्नि के रूप में मैंने काफ़ी काम किए हैं, इसलिए मैं वन पंचायत और वन विभाग और वनाग्नि के बारे में कुछ बात करूँगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वन पंचायत और वन विभाग एक इकाई हैं जिन्होंने कि जंगल पे अपनी देखभाल रखी हुई है, और जंगल को जो है देखने में, जंगल को बचाने में वन पंचायत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके लिए कि वन पंचायतों में सिर्फ भारत के उत्तराखंड में ही वन पंचायतें हैं, वो भी उत्तराखंड के केवल 11 जिलों में वन पंचायतें हैं। इसलिए वन पंचायतों के बारे में ये है कि जंगलों से गुजरने वाले, जब आग की जहाँ तक बात है, वनाग्नि क्यों लगती है कि जंगलों से गुजरने वाले जो रास्ते हैं हमारे होते हैं उनकी सफाई नहीं की जाती है। वन पंचायत ये काम करती है कि जो रास्ते 2 गाँव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, 4 गाँवों के रास्ते हैं और महिलाओं के घास के जाने रास्ते हैं, उनकी बार बार सफाई करती रहती है। तो उत्तराखंड के ग्रामीण कई दशकों से और कई अपने क्षेत्रों में आज भी पूर्ण तरह जंगलों पर निर्भर हैं, आधारित हैं। अतः जंगलों को वनाग्नि से बचाने के लिए परंपरा से ग्रामीणों के कर्तव्यों के रूप में विद्यमान रहा है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी हमारे उत्तराखंड के ग्रामों की महिलाएं जंगलों को अपना मायका मानती हैं। इसलिए भी जंगलों के प्रति हमारा वन पंचायतों का ज़्यादा रुझान हो जाता है। गांव के जंगल को आग से बचाए रखने के लिए वन पंचायत अपना प्रमुख कर्तव्य मानती है। ग्रामीणों को इस काम से ज़्यादा भागीदारी वन पंचायतों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपने अपने लिखित या मौखिक रूप से बनाए गए नियमों उपनियमों को लागू किया जाता है। जो भागीदारी नहीं करता है उससे गांव से अलग भी किया जाता है, क्योंकि अगर वो जंगल की आग बुझाने ना आएगा, इसलिए उसको जो है जंगल से अलग भी किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथ साथ जंगल की में आकस्मिक आग पर नियंत्रण करने के लिए वनों के भीतर स्थित जल स्रोतों का संरक्षण करना ग्रामीणों एवं वन पंचायतों का कर्तव्य हमेशा से ही विद्यमान माना जाता है। जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वानस्पतिक, क्योंकि जंगल की आग को बुझाने में हमारे जो कई इक्विपमेंट फेल हो गए हैं, लेकिन हमारी वानस्पतिक झांपा जो कि झाड़ियों को काट के बनाया जाता है वही जंगलों की आग को काबू करता है। इसलिए हम उसकी झाड़ियों को भी निरंतर गांव की सीमा के अंतर्गत संरक्षण दे करके उनको बचाए रखने की कोशिश करते हैं। वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व जंगल को आग से सुरक्षित रखने के लिए परंपरागत फायर लाइन, जो हम लोग परंपरागत फायर लाइन बनाते हैं, उनकी सफाई करना वन पंचायत और ग्रामीणों की आवश्यक सामूहिक कर्तव्य हमेशा ही बना रहता है। यह कार्य जंगल सीमा से दैनिक काश्तकारी रास्ते, 2 या अधिक गांवों को जोड़ने वाले रास्ते, चारागाहों तक जाने वाले रास्ते, महिलाओं के दैनिक घास लेने के रास्ते, इन रास्तों की वनाग्नि सीजन में हम पहले से ही सफाई और मरम्मत का कार्य हम परंपरा के अनुसार करते हैं। वनाग्नि पर नज़र रखने के वह समय पर ग्रामीणों को सूचित करने के लिए वन पंचायतें सामूहिक प्रयासों से आधार पर सीजनल चौकीदार, वन प्रहरी नियुक्त करने का कार्य भी करती है। लेकिन ये जो सारे चीज़ें वन पंचायतें और ग्रामीण सहभागिता से होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, जो परंपरागत वन प्रबंधन एवं वनाग्नि प्रबंधन व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है, वो क्या है कि परंपरागत वन आधारित व्यवस्थाएं वर्तमान में कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान में सरकार का हस्तक्षेप या उदासीनता पंचायती प्रबंधन व्यवस्था को नहीं जा रही है। सरकार और या वन विभाग जिन वन पंचायतों की राय लिए बिना ही अपनी योजनाएं बना देती है, जिसका प्रमुख उदाहरण है कि वन प्रहरी को मानदेय पर रखना।
क्योंकि ये काम सारे आग बुझाने के काम, रास्तों की सफाई के काम गांव वाले पहले खुद ही करते थे। लेकिन वर्तमान में सरकार माने वन विभाग ने क्या कर दिया है कि बाहर के गांवों से निकाल करके या अपने उसी गांव से 1-2 सीजनल वन प्रहरी रख दिए हैं, जिससे कि लोगों को आग बुझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं को लाओ जिनको तुम तनख्वाह दे रहे हैं, जिनको तुम वेतन दे रहे हैं, उनको लाओ, वही आग बुझाएंगे। इसलिए उसमें भी आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा कारण आग की घटनाएं बढ़ने का क्या हो गया है कि पलायन इसलिए हो गया है कि जब से उत्तराखंड बना और 1980 के बाद जो वन अधिनियम हुआ कि 1000 मीटर से पेड़ तक जो है हरे पेड़ों का कटान नहीं होगा, तो जबकि हरे पेड़ों का कटान आग लगने का कारण ही वही है, क्योंकि 1000 मीटर तक जो है चीड़ का पेड़ बहुत फैल गया है और उसके जो छेते जो बीज होते हैं वो हर साल उसमें नए पेड़ जन्म ले रहे हैं और जब सड़क से ही आग लग रही है, इसलिए आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो गई हैं। दूसरी बात है कि गाँव में पलायन हो गया है। एक गाँव में कम से कम 40 परिवार, 50 परिवार, 60 परिवार रहते थे और सबके पास एक गाय, 2 बैल होते थे। रोज़ वो जंगल जाते थे, रोज़ जंगल से आते थे, उनके साथ एक ग्वाला होता था जिससे कि पिरूल जो है उनके खुरों से ख़त्म हो जाता था। फिर वो कंडी भर के पिरूल घर में भी लाते थे और अपने गायों के नीचे बिछाना होता था। तो वो भी नहीं है, इससे भी पिरूल की संख्या मात्रा बढ़ जाने से आग लगने का खतरा ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकारें इस ओर ध्यान दें। और वनाग्नि एक बहुत बड़ा आपदा है जिससे कि तमाम जंगलों में वन्य जीव, काश्तकारी इत्यादि की समस्याएं हो गई हैं। इसलिए जो है आग पे बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कही है, धन्यवाद। अब उसके बाद अगले वक्ता। धन्यवाद सर। मेरा नाम है गजेंद्र पाठक। मैं शायदेवी शीतलाखेत अरमड़ा क्षेत्र से आया हूँ और पिछले 20 साल से हम लोग फॉरेस्ट फायर पे और जंगल के रिस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और मंच से नीचे बैठे कल्याण सिंह रावत जी और सभी सज्जन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहूँगा सर। अभी पूरे इस विमर्श में बहुत बड़ी बात आई थी कि कम्युनिटीज़ पे सारी बातें होनी चाहिए। जैसे इस जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें लिखा है विथ स्पेशल फोकस ऑन माउंटेन इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। सारे वैज्ञानिकों ने, सभी लोगों ने कम्युनिटीज़ की बात कही। खेत करके होगा एक वीडियो होगा उसका वीडियो होगा तो, लेकिन आज लास्ट में क्या होता है, ना कम्युनिटीज़ को सुना जाता है ना सुनने वाले रहते हैं। अगर कम्युनिटीज़ को सुना जाता होता तो शायद पॉलिसी जिस हिसाब से बनती है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कम्युनिटीज़ को ना कोई सुनने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाइटर नोट पर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बात तो हमें कहनी चाहिए नहीं। तो पिछले 20 साल से हम लोग शीतला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वीडियो था एक, हाँ। तो उसमें बेसिकली हमें 4 चीज़ों पर काम किया है सर। कि एक जो बात कही जा रही है कि जन और तंत्र में आपस में तालमेल नहीं है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो हमारे क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जनता दोनों मिलजुल के जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बेसिकली शायदेवी शीतलाखेत क्षेत्र है जो कोसी नदी का एक प्रमुख रिचार्ज जोन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो इससे एक बड़ी चीज़ जो आप बार बार इस बात की बात करिए, सर लोगों ने कहा कि कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करें। तो हमारे क्षेत्र में 30 से अधिक गाँव की जो महिलाएं हैं वो जंगलों को बचाने के लिए आ गई हैं, जंगलों को बचाने पर काम कर रही हैं। और 2 तरीके से हम जंगल बचा रहे हैं। पहली चीज़, जंगलों पर लोगों की निर्भरता खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक जंगल हैं और उस पर लोगों की निर्भरता है तो जंगल नहीं बचाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे उत्तराखंड में अभी भी कम से कम 4 या 5 लाख परिवार जो गांव में रहते हैं वो भी खेती बाड़ी के लिए हल चलाते हैं। और वो हल बनता है, बांस का बनता है। और एक पेड़ कटता है जो 70 से 80 साल का होता है, वो पेड़ एक बार हल बनाने के लिए कट जाता है। उसके बाद जब उसका दरेड़ा वो फाल बनता है, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख पेड़ हर साल कट रहे हैं उत्तराखंड में। हम लोग 4 धाम यात्रा में 10,000 पेड़ कट गए तो उस पर हम बड़ी चिंता करते हैं कि भैया ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन वो जो 2 लाख पेड़ हर साल कट रहे हैं उस पर कोई चिंता नहीं है। तो हम लोगों ने एक विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर लोहे का हल डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड VL शाही हल। और आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड के 10 जिलों में 10,000 से ऊपर फार्मर्स उस हल को चला रहे हैं। प्लांटेशन की बहुत सारी बातें होती है कि हमने इतना सारा प्लांटेशन किया है, कितने बचे, क्या बचे, वो सब बात की बात है। लेकिन हम एक दावे से कह सकते हैं कि उस हल के प्रयोग माने से हम हर साल 4 से 5,000 पेड़ हर साल बचा रहे हैं। अगली बात आती है सर कि जंगल की आग। जंगल की आग पे जब तक काम नहीं किया जाएगा धरातल पर, बाकी सब बातें अपनी जगह पर होंगी। तो हम पिछले 20 साल से उस पर काम करें महिलाओं के साथ मिलकर। हमारे वहाँ 2 नारे आगे आए हैं। एक तो ओनरशिप की भावना
जब तक लोगों में ओनरशिप की भावना नहीं आएगी कि जंगल हमारे हैं, तब तक लोग आग बुझाने नहीं जाएंगे। और हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि जब लकड़ी के लिए, हल के लिए, दनली के लिए, छिलका के लिए, गुलिया के लिए, झूले के लिए, लीसा के लिए, लकड़ी के लिए, पत्थर के लिए जंगल आपका है, तो आग लगते वक्त भी जंगल आपका है। ये ओनरशिप की भावना हमने डेवलप की है। तो आज आग लगते वक्त लोग वन विभाग का इंतजार नहीं करते हैं। हम लोग खुद महिलाओं के साथ, मैं हूँ, मेरा भतीजा है, हम सब लोग टीम बना के जंगल में आग बुझाने जाते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 2012 से 2023 तक 12 सालों में हमारे वहाँ फायर की इंसिडेंट हुई है, लेकिन विद इन एन आवर हमने उसको एड्रेस किया और आग को रोका है। और उसका परिणाम यह हुआ है कि एक पूरा 1100 हेक्टेयर एरिया, आज प्लांटेशन की बात हो रही है, जंगल आगे बढ़ाने की बात हो रही है, हमने 1100 हेक्टेयर एरिया को डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मिक्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और विदाउट प्लांटेशन एक भी पौधा रोपा नहीं गया है। आप कभी आके देख सकते हैं शादी विश लागत के एरिया को। आज पूरे उत्तराखंड को हरा भरा बनाने की बात है, तो हम लोगों ने एक मॉडल सेट किया है उत्तराखंड के लिए कि पूरे सभी जगह ले जाया जा सकता है। अब चूंकि आपके पास समय नहीं है, बातें बहुत सारी कहने को और सुनने के भी लोग नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस पूरे इकोसिस्टम को बचाना है, कम्युनिटीज़ को बचाना है, तो माउंटेन सिस्टम को बचाना, तो कम्युनिटीज़ को सुनना जरूरी है। और सुनने के बाद उसको पॉलिसीज़ में भी आना जरूरी है। हमारी बात हमने कह दी, भाई साहब ने कहा, मैंने कुछ कहा, वो इस कान से उस कान से निकाल दी गई, उसका कोई अर्थ नहीं है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए दुर्गेश पंत जी का आप सब लोगों का आभार। मैं दो ही चीज़ें लास्ट में कहना चाहूँगा कि ANR का जो मॉडल शीतलाखेत से निकल के आया है, एक भी पेड़ नहीं रोपा गया है, लेकिन जंगल वापस आ गया है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए एक मॉडल हो सकता है। दूसरा, आपने एक चीज़ और बताई है, आग को लगने से पहले, लगने के बाद मेहनत करने बजाय आग लगे ही ना, इसके लिए ओण दिवस का हमने प्रस्ताव दिया है। ओण एक परंपरा है पूरे उत्तराखंड में, सब जगह कहीं ओण, कहीं आड़ा, कहीं केड़ा कहा जाता है। उसका क्या है, लोग खरीफ की जब फसल की तैयारी करते हैं तो खेत के किनारे जो खरपतवार उग के आई है उसको जलाते हैं, एक रिचुअल है, कहीं ओण कहीं आड़ा, और वो 90% फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने ओण दिवस का विचार दिया 2022 से, अगर हम ओण को टाइम बाउंड कर दें, मैनेज कर लें कि मतलब 31 मार्च के बाद नहीं जलाएं। 31 मार्च के बाद क्यों? क्योंकि अप्रैल, मई, जून के 3 महीनों में तेज हवाएं चलती हैं, पिरुल में पतझड़ होता है, उसके अलावा गर्मी बढ़ जाती है। ये तीनों कारक जो है आग को बढ़ाने में सहायक हैं। उस ओण, आड़ा, केड़ा को अगर हम 31 मार्च से पहले ले आएँ तो हम 90% आग के मामलों को रोक सकते हैं। यही शीतलाखेत छाया देवी का एक मॉडल है। मैं चाहूँगा ये मॉडल पूरे उत्तराखंड के लिए मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सटीक आपके निष्कर्ष हैं और आपका बहुत अच्छा यह प्रयास है जो आपने ये कहा कि उसका समय बांध दिया जाए। वो तो सरकार के तंत्र से भी हो सकता है और लोगों से मिल के हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। एंड अब अगला आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे। ये वाला राजेंद्र सिंह भी। मेरा जो सब्जेक्ट था वो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर कंजर्वेशन पे था। तो मैं मंच के सभी लोगों का अभिवादन करूंगा और साथ में आप सब लोगों का। इसका ये फॉरवर्ड अच्छे। इसमें हम जैसे वाटर पर हम अगर बात करते हैं तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर, घराट, साना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो एक्टिविटी है, साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और कुछ लोग हम लोगों ने जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं, हिमालयन ग्राम विकास समिति के माध्यम से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हमने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ में काम किया है। तो ये वाटर क्राइसिस का एक फ़ोटो है और ये जो ड्रिंकिंग वाटर का हमारा जो प्राचीन जो मॉडल है, नौला, जो काफ़ी फेमस है। तो ये नौले का है और नौले में जो जिस तरह से हमारी धार्मिक भावनाएं और जिस तरह के आदर भाव से हम उसको लेते हैं, ये उसके फ़ोटो हैं। ये नौला हमारा एक जो है पहला जो फ़ोटो है, ये महाकाली मंदिर के पास एक जानवी नौला है और उसकी मानस खंड में उसमें इस तरह से विवरण है कि जो हमारी शैलपुत्री का भी जो जन्म हुआ इसी नौले जानवी जलप्रपात के रूप में हुआ। और ये नौले का 4 फोटो इसी नौले के हैं, नीचे पानी का है और ऊपर उसकी अंदर की जो उल्टी छत है उसका सेकंड फोटो है। थर्ड फोटो जो है ये वहाँ पर एक पाली
लिपि में एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें 1189 सन का ये निर्मित है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 साल की तो ये कम से कम ये नौला एक एविडेंस है, जिसमें न सीमेंट था और न कोई और बाहर का मटेरियल था, सब लोकल मटेरियल है। और इसकी नक्काशी और ये इस नौले को देखने से हमें पता चलता है कि हमारा जो शिल्प था वो बहुत अच्छा था। और साथ में हमारे यहाँ इस तरह से भी लोग देखते थे कि नौले, गांव की संपन्नता उसके नौले से देखने की बात है। और नौले से मैसेज भी हुआ करते थे, जैसे सुबह सुबह लोग पानी के लिए जाया करते थे, पूरे गांव में क्या हो रहा है और क्या घटनाएं घट रही हैं, ये सारा नौले से भी हम लोगों को पता हो जाती थी। ये धारे हैं, नौला और धारा दो कॉमन चीज़ है। कई बार इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, दोनों स्प्रिंग हैं, दोनों नौले और धारे। नौले वहाँ बनाए जाते थे, बीच में मिडिल हिमालयाज में आप ज़्यादा नौले देखेंगे। कारण क्या है कि वहाँ पानी कम है, डिस्चार्ज बहुत कम है सोर्स का, तो स्टोर टैंकी है एक किस्म से नौला कंसेप्ट। जो आज टैंक बना रहे हैं वो उसको स्टोर कर रहा है। और धारा वहाँ पर बनता था जैसे हाई हिमालय या जो आप वैलीज में देखेंगे आप, वहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा है, हायर हिमालय में भी ज़्यादा है और नीचे वैलीज वाले इलाकों में भी, तो पानी काफ़ी है तो वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये धारे बनाए जाते थे और इनका भी काफ़ी वही स्थान नौले की तरह इनको भी दिया गया है। इनके प्रति भी काफ़ी आदर है। एक चौथा फोटो जो है ये भी एक वाटर कंजर्वेशन का है। इसको ओल्ड वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं हम। ये धारों पर या कहीं पर पूरे जो हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ हैं, लोग पत्थर को छिल के पानी स्टोर करने के लिए बना देते थे और इनमें कपड़े भी धोया करते थे लोग तारों के पास। ये इस तरह के और इसी तरह के स्ट्रक्चर से हमारे लकड़ी के जो बड़े 3 से 4 फीट जिनका डाया रहता था, उनको भी छिल के लोग पानी स्टोर करने के लिए पुराने टाइम पर वो बना दिए जाते थे। और फिर घराट और साना इसको घराट को तो लगभग सब लोग जानते हैं, हम आटा चक्की पिसाई का काम ये करते थे, लेकिन इसके साथ साना होता था। उसकी फ़ोटो इसमें नहीं, ये घराट के 4 फोटो हैं और ये भी घराट के फ़ोटो हैं। ये पानी से चलती है, इसका पतनाला ऊपर है, तो ये है। साना के फ़ोटो नहीं है, उसमें उसका भी सिस्टम लगभग घराट का जैसा था और कोई लकड़ी का एक पार्ट लेके और उसमें पीछे कोई एक हंडिल जैसा बना दिया जाता था, उसमें फिट करके और उसको फिर छिल के धीरे धीरे उसमें लकड़ी के बर्तन, विशेषकर जो हमारे दूध दही और घी मक्खन के जो बर्तन होते थे उनको बनाने के काम आता था वो। और अब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें, इस तरह से चाल खाल की बात पूरे हिमालयी क्षेत्रों में है और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा था ये। और ये एक गंगोली हाट हमारा जो ब्लॉक है, ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है 8125 फीट की। हम लोगों ने 7000 फीट पर एक पोखर था पुराना छोटा, इस पोखर को हमने रिनोवेट करके इसकी कैपेसिटी हम जो मुश्किल से 2 लाख लीटर 3 लाख लीटर थी, हमने इसको आपका बना दिया 1 करोड़ लीटर का। और ये आज एक मॉडल है, इससे काफ़ी कुछ अमृत सरोवर में भी इसको अडॉप्ट किया गया है सारे प्रदेश में। ये उसी की फ़ोटो है जब पूरा भरा हुआ है। और ये इस तरह से एक ब्लॉक हेडक्वार्टर के पास पुराना मड़कोटी राजा के टाइम का एक छोटा सा पोखर था। पोखर माने थोड़ा तालाब से बड़ा स्ट्रक्चर होता था, तो जो दोनों रिचार्ज का भी काम करता था और पानी के उपयोग के लिए भी हम काम करते थे। और एक इस तरह की भी स्थितियाँ हमारे पहाड़ों में है। ये बड़ा यूनिक एक फोटोग्राफ्स हैं। ये एक राई आगर हमारी बेरीनाग ब्लॉक से लगी हुई एरिया है, राई आगर से चौड़मुनिया। उसमें पहाड़ी तो बहुत, उसका कैचमेंट हार्डली 100 मीटर होगा और वहाँ पर 100 मीटर में नीचे जो गांव बसे हैं उसमें लगभग 1 इंच पूरा पानी। और मेरा गांव 1 किलोमीटर, जो मेरा अपना गांव है उसका कैचमेंट 1 किलोमीटर ऊपर होगा, लेकिन वहाँ पानी बहुत कम था। तो बार बार ये आता था कि यहाँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक भालू जवार एक जगह है ऊपर चोटी में, वहाँ भालू रहते हैं। तो हम गए तो ये इसमें इतने फ्रैक्चर्स हैं करीब 200-300 मीटर के एरियाज में और बिल्कुल टनल है और इसका कुछ कैचमेंट भी है जो सेकंड फोटो में देख रहे होंगे आपके, दूर से भी इनमें पानी आता है। तो इस तरह के भी कई चीज़, हमें अपनी जियोलॉजी और अपनी ज्योग्राफी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, हम लोग जाते ही नहीं है। जैसा अभी थपलियाल साहब ने भी किया कि पहले जंगल जाते थे, तो हम जंगल से कनेक्ट ही नहीं। गांव माने जहाँ तक सेटलमेंट है उसी को हम गांव मानते हैं। तो ये जानकारी भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।
और ये तो एक इरिगेशन का था। इरिगेशन की जो कच्ची गूल हुआ करती थी वो पहले हमारे रिचार्जिंग के लिए भी काम करती थी। ज़मीन के अंदर पानी जाता था और टेल तक बहुत कम पानी पहुंचता था। अब हम लोगों ने ये सोचा कि टेल तक हमें पूरा पानी ले जाना है, तो हमने सीमेंट की नहरें बना दी। और इसी तरह से ये खाल होता था एक छोटा सा, उसको तोड़ के उस समय सिंचाई कर लेते थे हम 8-10 खेतों की। उसकी जगह भी टैंक आ गया। ये फ़ोटो हमारे पास वो पुरानी नहीं है। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इस तरह से कुछ कंटूरिंग और प्लांटेशन, और ये एक हम लोगों ने भी मिक्स फॉरेस्ट की कुछ कोशिशें की हैं वहाँ पर। और ये चौथा फ़ोटो जो है ये हमारे यहाँ, इसका मैं इस दूसरे फ़ोटो से रिलेट करूँगा कि महिलाएं अभी ये झाड़ू में पूरा वो पत्तियों को इकट्ठा करके लाती थी। और वो पत्तियों को इकट्ठा करके लाने के बाद उसको एक तो वो बिछाने का काम आ जाता, तो दूसरा सड़ के वो बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बन जाता था। और इससे भी जंगलों की सफाई हो जाती थी। एक ये फ़ोटो है, इस पर आपका मैं ध्यान चाहूँगा कि ये फ़ोटो जो है आप इसमें देखिए मार्च का है। सब जगह नई पत्तियाँ आ गई हैं, बसंत ऋतु है। और जहाँ पर पाइन ट्री हैं वहाँ पर आप देखिए वो अब पतझड़ शुरू हो रहा है। और ये पतझड़ भी केवल मार्च से शुरू होके मार्च में ही ख़त्म नहीं होता है, ये अप्रैल 15 मई तक भी जाता है, करीब 4-5 बार। अगर हम पाइन फॉरेस्ट को अगर आग से बचाना चाहते हैं, हमें 15 दिन के अंतराल से 5 बार पिरूल की सफाई करनी पड़ेगी। और दूसरा ये फ़ोटो ये भी कहता है कि ये शायद क्योंकि हमारे यहाँ पतझड़ तो सब में अभी हो जाता है झाड़ू में, और बसंत मार्च में हमारे यहाँ सभी जगह नई कलियाँ आ जाती हैं। तो ये इसमें नई कलियाँ नहीं आ रही, पतझड़ हो रहा है। तो ये भी एक माना जा सकता है कि ये यहाँ का पौधा नहीं है, ये बाहर से लाए। और इसको एक पॉकेट में वो करना है, रोकना है। पूरे जंगलों में साल, बाँझ, इसमें देवदार में फैले, इसको हम कुछ पॉकेट तक सीमित रखें। ये एक कहानी इसकी है। और ये रेन वाटर सिस्टम हमने कुछ इस तरह से बनाए हैं। चोटी वाले गांव हैं तो हम लोगों ने एक 4 लाख लीटर का टैंक बना के उसको 1200 मीटर पाइपलाइन से जोड़ के इस तरह से दिया है। ये इसी का भरा हुआ है। ये कुछ हमने मनरेगा में अंडरग्राउंड टैंक बना के इनके ऊपर स्लैब डाल के हैंडपम्प लगा के 1-1 लाख के नौले के आगे स्टोर टैंक बना दिए, जो मार्च से फिर जून तक की उनकी सप्लाई को करते हैं। ये भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर हमने इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक 10-10 हज़ार लीटर के। चौथे फोटो में एक बाकली में 3 परिवार हैं तो 3 टैंक के यहाँ पर हैं इस तरह से। और ये कुछ और जैसे पॉलीलाइन फेरोलाइनिंग कर दी हमने इसको, क्योंकि प्लास्टिक पन्नी को कोई फाड़ देता है या चूहा काट देता है जब खाली होता है, तो हमने इस तरह से लाइनिंग करके। और ये सजेशन आप सब लोग ने बहुत कुछ दिए हैं, तो मैं ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपका ये एफर्ट, और 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट को आप देखते हैं। इसके बाद भट्ट साहब अरुणाचल से। Respected chair, co-chair, and the house, good evening. I represent here from the state of Arunachal, though I belong to Uttaranchal. Basically, I'm a wildlife biologist. I'm a retired scientist from the forest department. Coming to my experience mostly is with the wildlife and biodiversity. As far as the management of disaster arena, there is a full-fledged department in government of Arunachal Pradesh, right from the hierarchy of minister down to the district disaster management officer. So all government agencies, full paraphernalia is there. And there have been regular trainings in the constituency level of all the 60 constituency of Arunachal. Time to time, they train volunteers from all part of probable disaster in future or in that. Frankly telling, for the last 30 years or so during my survey, I am yet to see a big disaster in Arunachal as such. So maybe we are not prepared for that line. However, my little bit experience in the field and all that, I see fire, one of the most, but they are mostly anthropogenic. And now is the winter coming up, and most of the time we often see villages being totally fired up in most part of Arunachal. Secondly, I saw flash flood during the monsoon. Moreover, the geography or the microclimate or the agroclimatic condition of the Arunachal is so that it rains
I believe, 9 months throughout a year. So June, July, August being the most extensive period. And during that, a lot of flash floods occur, and in downstream, when the mainly the 5 river system, they come down to the plains, we see most of the flood affected areas in the all Assam Arunachal bound area. And a very rare occasion we had, I think in 2009 or 10, there was a flash flood in some part of West Kameng near Dirang and Munakam. To me, what is more concern of all these things is that the present day widening of roads, the state highways coming up, being me as an explorer or been doing environment works, like places like the recently, the tunnel coming up above Baisakhi to Sela, under Sela to Jang and all that. Sir, I'm very sorry to say within, I mean, 3 to 4 months, the whole, that slope has gone, and I had 52 species of orchids there. They have been totally washed up due to that. So I believe this is also a disaster for me. I mean, they could have easily made the approach road all along the prevailing road. But sorry, I don't have any picture, but it is available on the net and all. So they have taken the approach road down from 2.5 kilometers down the slope, and they have gone all the way. तब जाके पहाड़ को फोड़ना शुरू किया है, उसके बाद शुरू. That 2.5 kilometer patch has ruined me 53 species of endemic orchids in that area. Likewise, on way to Machuca, on way to Pasigat, about Tooting Valley, all along the Siang Valley, I fear if this type of things are coming up, we are going, or we may get, I mean, we will lose most of our endemic species of that in the area. And Arunachal, we all know it's one of the hotspot of biodiversity. And me working for last 36 years in forest department, I think I have seen just 20% of Arunachal. That too exploring on foot. So a lot of things are there to be prayed. So we should always have a concern about it. I have been in part of many EIA committees, that every time we make reports and all things that, but it doesn't work. So to me, floods, fire, and this widening of road and all, I feel at present this is the challenging disaster occurring in Arunachal. So as far as community is concerned, well, Arunachal has a very good network of ethnic communities. There are as such 26 tribes, 110 major tribes. Every tribe, they have a very thick, knit community concept. They are self-help groups in all the villages and all that. Most of the government agencies, they are distributed through SSG. So communities are very strong and they always voice for it. With this, with the shortage of time, I conclude myself. Thank you, sir. Thank you very much for your concern. The road construction. Thank you. Yeah, but then, you know, the Government of India notification says that within 100 kilometers from international border, you don't need clearance of Government of India Forest Department. So anyway, that's an impact of development. Yes, please. Now the next speaker. रेस्पेक्टेड मंच पर आसीन सभी डिजास्टर मैनेजमेंट स्पीकर, डेलीगेट्स, आयोजक, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी बोलने की मिली. मेरे प्रैक्टिकली ज़मीनी अनुभव हैं. जब केदारनाथ में 16 जून 2013 में डिजास्टर आया था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अफसर एज ए जनपद हरिद्वार देख रहा था. और 16 जून 2013 में उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ. जो मंदाकिनी नदी, जो सबसे शांत नदी उत्तराखंड की कहलाई जाती है,
जबकि आप सभी ने अलकनंदा का रूप देखा है, भागीरथी का देखा है, गंगा का देखा है, लेकिन मंदाकिनी के बारे में नहीं सुना। लाखों श्रद्धालु यात्री 4 धाम की यात्रा के लिए आए हुए थे और 16 जून में कभी भी इस तरह की कभी भी बरसात नहीं हुई, कभी भी इस तरह का मौसम भी नहीं रहता था। तो सब एक तरह से अनभिज्ञ थे। जब 16 जून 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो तब यहाँ SDRF भी नहीं होती थी, कम्युनिकेशन में भी बहुत कम थे। NDRF, आर्मी सब कोऑर्डिनेट मैंने हरिद्वार से कराई, सबको रहने की व्यवस्था, सारी राहत सामग्री। और जब जो कैजुअलिटी हुई 6050, 90% लोगों से, मरने वालों से मेरी बात हुई। इत्तेफाक देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति कैसे हुई, क्योंकि मेरे 2 नंबर हैं, मोबाइल नंबर इंटरनेशनल फ्लैश कर दिए गए थे स्टेट लेवल से। तो उनके जब तक उनसे बात हो रही थी, उनके परिवार के सदस्यों से जो केदारनाथ यात्रा में फंसे हुए थे, जीवित थे तब तक, तो उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर दे दिए कि आपको कोई बात है, क्योंकि हमारे मोबाइल फिर चार्ज में भी नहीं रहेंगे कहीं, तो आप इनसे बात करते रहिए। तो उन्होंने भी मेरे से बात की, जो नहीं है आज इस दुनिया में, और जो उनके सदस्य थे, किसी के माँ थे, किसी के बाप थे, किसी के बच्चे थे। इंटरनेशनल भी इस तरह की मेरे पे कॉल आती रहती थी, पूरी रात कॉल आती थी, और ये कहते थे कभी अंकल रोके फोन मत काटना, क्योंकि वो लैंडलाइन पे विश्वास नहीं करते थे। वो भावुक क्षण इस तरह का था उत्तराखंड में, ऐसा क्योंकि सोचा भी नहीं था कि क्लाउड बर्स्ट होगा, उसमें लैंडस्लाइड्स भी होगा और फ्लड भी आएगी। दोनों तरह का डिजास्टर देखने को उत्तराखंड में वो मिला था। उसके बाद जो 3075 संख्या भी मुझे मालूम है, और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एनाटॉमी में, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आप कहेंगे एनाटॉमी का भी लाभ मुझे मिला, क्योंकि जब 10-15 दिन बाद बॉडी बहकर गंगा में आई थी, तो उनको मैंने अपने डिपार्टमेंट में 39 बॉडी आई थी, डॉक्टर निधि पांडे DM थी और राजीव स्वरूप साहब SSP थे, तो वो मैंने ही कोऑर्डिनेट किया, मैंने ही उनको बॉडी को महीनों रखवाया इस तरह से। तो जब वो इस तरह की कैजुअलिटी 3075 जो मिसिंग हुए थे, उनके परिवार के सदस्य कई महीने तक आते रहे। उनके लिए मैंने काउंसलिंग टीम बनाई अपने, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूं, तो मैंने अपने वॉलंटियर्स तैयार किए। उन वॉलंटियर्स को समझाया कि इनको समझाइए, क्योंकि लोग आ रहे थे परिवार सहित, गाड़ी करके आ रहे थे, रो रहे थे, कहते थे कहीं किसी आश्रम में भटकते हुए किसी पंडित ने बता दिया, किसी इसने ज्योतिषी ने बता दिया हमारे, तो हम उनको समझाकर भेजते थे। उनको कई दिन रहने की व्यवस्था करते थे सभी धर्मशाला होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह का उत्तराखंड में, और जनपद हरिद्वार की मैं बता दूं, क्योंकि ऊपर तो जो भौगोलिक परिस्थिति है इस तरह से आते रहते हैं जो इस तरह के डिजास्टर, लेकिन हरिद्वार जनपद को वो इस तरह का डिजास्टर देखना पड़ा, क्योंकि सारी राहत सामग्री साहब का आना, क्योंकि ऊपर रास्ते बंद हो गए थे, तो हरिद्वार से ही कोऑर्डिनेट करने का मौका मिल रहा था। तो उस समय इतनी राहत सामग्री ट्रेन भर भर के आ रही थी। उनको भी हमने कहा कि आप जो राहत सामग्री की हमें जरूरत है, हमारा इस तरह के वो आने लगे थे, ब्रेड सब वो होने लगे थे, लेकिन सभी ने मिलकर, तो वो एक अनुभव इस तरह का कि कभी भी डिजास्टर इस तरह के आ सकते हैं। और उसके बाद जो उस पर रिसर्च हुई, और माननीय मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने सबसे पहले लाइजनिंग अफसर, उन्होंने अपने IAS अफसर भेजे थे, वो भी हरिद्वार में, वो सब मेरे से कोऑर्डिनेट करते थे, सब टोटल। और उसमें मुझे सम्मान मिला, और आज तो आप लोगों ने ये मौका दिया, मुझे ये प्रैक्टिकली अनुभव है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा बना के नहीं लाया। तो आप व्यक्तिगत एक एक डाटा, उसके बाद जब वो हुआ तो 1 महीने की ड्यूटी मेरी केदारनाथ में स्पेशली लगाई गई, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन मेरे अनुभव इस तरह के थे प्रैक्टिकली, और मेरे वॉलंटियर्स में काम करने का इस तरह का जज्बा है, जुनून है। आज जब से 4 तरह मैं रोज आना पूरी की पूरी अटेंड कर रहा हूँ। मैंने आयोजकों से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू, तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस तरह का मौका दिया। और मेरे अनुभव ऐसे हैं, कभी ऐसा लेक्चर, वास्तव में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड 2007 में अब्दुल कलाम साहब द्वारा मिला, मुझे ऑनरेबल गवर्नर ने, ऑनरेबल CM ने 2013 डिजास्टर का दिया। तो लेकिन मेरे अनुभव मैं चाहता हूं कि शेयर हों। इसी तरह से मैन मेड, छोटा सा मैं और एक बताना चाहूंगा, मैन मेड जो डिजास्टर हरिद्वार में, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और उसमें कांवड़ मेला, 86 में एक मैन मेड, मतलब थोड़ा सा अनुभव अगर टाइम दे दें 1-2 मिनट का, तो उसमें भी इस तरह की कैजुअलिटी हुई थी, 47 कैजुअलिटी। तो इस तरह की डिजास्टर का अनुभव है। और वो कैजुअलिटी क्यों हुई थी? 4 VIPs आए थे,
बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी थे, मध्य प्रदेश के थे, भजनलाल जी हरियाणा के थे, और वीर बहादुर सिंह जी यहाँ के थे। तो वहाँ भी इस तरह की मैन मेड कैजुअलिटी की एक से आना था रास्ता, एक से जाना था। और मेरे सुझाव सर, मेरे सुझाव बुक जो छपी है, उसके बाद जब जांच होती है, जांच अधिकारी होते हैं, सब लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, एसएसपी डीएम ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरी नॉट ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो गवाह भी मैं रहता हूँ और एक तरह से उसका देखने का मौके का भी मैं रहता हूँ। तो ये अनुभव, तो उस समय वीर बहादुर सिंह जो 47 कैजुअलिटी हुई थी, कैलकाटा के परिवार के कई सदस्य मरे थे, और वीर बहादुर सिंह जी पहले उस दिन ही आए हुए थे, पहले दिन स्नान के लिए। आज मैं आपसे एक ऐसी गोपनीय बात शेयर कर रहा हूँ, विद फैमिली आए हुए थे, और उनकी मिसिज का फ्रैक्चर हो गया था और उनको हॉस्पिटल में वो किया गया था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि प्रोटोकॉल में उस दिन वीवीआईपी नहीं आ सकते। तो तभी से वीआईपी घाट हरिद्वार में, अगर आपने देखा होगा, 86 की घटना से वीआईपी घाट बनाया गया, और ये किया गया कि वीआईपीज ऐसे पर्व पे ना आए। तो इस तरह के अनुभव सर, ये मैंने ये थोड़ा सा केदारनाथ के साथ ये जोड़ दिया अपने अनुभव, लेकिन टाइम मेरा थोड़ा सा ये। और थैंक यू आयोजकों को विशेषकर इस तरह से। एक और मेरा सुझाव है सर, जैसे हमारे जो इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लेक्चर हो रहे हैं, ये सुनने का मौका सबको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स यहीं के होंगे, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटीज़ में भी है। अगर वहाँ के वॉलंटियर 100 को मौका मिलता तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यंग जनरेशन को सुनने को मिलती। मेरा सुझाव है, आगे कभी भी इस तरह का बड़ा आयोजन होगा तो आप वॉलंटियर्स को सुनने के लिए, उनको कुछ उससे नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जो आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हम कहेंगे कि अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी 7 रावत साहब, उसमें एनडीएमए के और स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के वॉलंटियर्स को जरूर बुलाना चाहिए। वेरी वेल सेड, थैंक यू वेरी मच सर। एंड द नेक्स्ट स्पीकर प्लीज, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सम्मानित मंच और इस मंच पर विराजमान आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी और सभी देश विदेश से आए हुए सम्मानित लोगों, मैं सिर्फ 4 मिनट का समय लूँगा, इससे ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। और जो मैं कहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि जो आयोजक हैं वो उनको नोट करेंगे। और वैसे तो मैं जो करता हूँ, मैं भारत सरकार को भी लिखता हूँ और उत्तराखंड सरकार को भी लिखता हूँ, और एनसीईआरटी ने हमारे काफ़ी सुझाव को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया है। मैं उत्तराखंड के संबंध में 2 बातें कहना चाहूँगा कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है ये नेचुरल है, और ये हज़ारों सालों से होता रहा है और होता रहेगा, करोड़ों सालों से हो रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने लेक्चर में ये बात कही कि जो 100 साल पुराने गांव हैं, 200 साल पुराने गांव हैं, वहाँ पर भूस्खलन की समस्या नहीं है। तो जनता को जागरूक करने के अतिरिक्त मैं उत्तराखंड सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो इंजीनियर्स हैं उनको जागरूक किया जाए। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है, जागरूक इंजीनियरों को करने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में जो रोड लैंडस्लाइड हो रहे हैं, डैम के आसपास लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उनका 90% उत्तरदायित्व इंजीनियर्स का है। उस निर्माण ना तो गाँव वाले करते हैं, उसमें ठेकेदार और इंजीनियर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी लेटेस्ट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा उत्तरकाशी का। आराकोट में 2019 में भूस्खलन हुआ, वो भूस्खलन जोन था ही नहीं, बहुत आराम से वो 10 लाख 20 लाख में वो रोड ठीक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको इतना बड़ा लैंडस्लाइड जोन बना दिया है कि आज 10 करोड़ खर्च होने के बाद भी वहाँ हर साल लैंडस्लाइड हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। और जो इंजीनियर्स हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि आपको किस तरह से लैंडस्लाइड जोन में रोड को बनाना है और किस तरह से काम करना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है। मैं समझता हूँ कि बाई चांस गलती से आप लोगों ने जेसी पंजी का नाम सुना हुआ होगा, जिन्होंने 95 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत कराई थी उत्तर इंडिया में। उस समय मैं 18-19 साल का था, मैं गलती से उनके संपर्क में आया, और उनके संपर्क में आने के बाद मैं बाई चांस इसी दिशा में फिर काम करता रहा। और ये आज बड़ा खुशी का पल है कि जो हम डिज़ास्टर रिलीफ की बात करते थे इंडिया में, उसके बाद 95 के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात शुरू हुई, और आज 25 साल बाद हम उसमें एक बड़ी सफलता हासिल की है
कि 17 दिन के बाद हमने सिलक्यारा में 41 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सपना उन लोगों ने देखा था, नहीं तो अगर हमारे देश में मैनेजमेंट की बात नहीं होती तो मैं समझता हूँ उनको जिंदा नहीं निकाला जा सकता था। ये उसी प्रक्रिया का प्रतिफल है कि आज 25 सालों के बाद हमने उन लोगों को जिंदा निकाला है। ये मैनेजमेंट की हमारी बहुत बड़ी सफलता है और हम सब आशान्वित हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम और बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। हमारे देश में जहाँ पहले रिलीफ की बात होती थी, अब मैनेजमेंट की बात हो रही है, रेस्क्यू की बात हो रही है, तो मैं बहुत ही आज जैसी पंत जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बीज डाला था, जो उन्होंने सपना देखा था, आज हम उसको सफल कर पाए हैं। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है, पूरी दुनिया ने इसको देखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जितने साथियों ने यहाँ पे अपनी बात कही, मंच में कोई लोग बैठे हों ना बैठे हों, लेकिन आपकी आवाज़ सरकार तक जा रही है। आप कलम उठाइए, पेन उठाइए, आप भारत सरकार को लिख सकते हैं, सीएम साहब को लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी बात को सुना नहीं जाएगा, आप बार बार लिखिए, एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे। मेरे द्वारा दिए गए 5 सुझाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किए गए। भले मैं कहीं क्रेडिट लेने की बात नहीं करता हूँ, हमारा मकसद सिर्फ काम करना है, तो आप करते रहिए। और यही हमारे सुनहरे भारत का, और जो 1947 का संकल्प किया गया है कि भारत को एक डेवलप कंट्री बनाएंगे, हम सब लोगों का उसमें सहयोग होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। आपका बड़ा दृढ़ संकल्प है और एक बात मैं आपसे सहमत करता हूँ कि इंजीनियरों की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं जब छोटा था, पहाड़ में रहता था, तो सड़क अच्छी बनती थी कि सड़क के साथ वो 2 फुट का नाला नहीं बनता था। और मैं अब भी गांव हिमाचल जाता हूँ तो वो नाला आज भी नहीं है। तो किसी ने पूछा कि नाला क्यों नहीं बनता, सड़क के किनारे नाली क्यों नहीं बनाते, कि वो ठेकेदार का इसमें हित है। तो उससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कम्युनिटी अगर डंडा लेके ठेकेदार के पीछे पड़े कि भाई मेरे गांव में सड़क बन रही है, 1 फुट का नाला क्यों नहीं बनता, हम वो नाला नहीं बना पाते क्योंकि हम बोलते नहीं। हम थोड़े डरते हैं, पहाड़ में अपना ही रिश्तेदार ठेकेदार है, लेकिन वो छोड़ना पड़ेगा। और ये नाले वाली बात आप नोट कीजिए। नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। मैडम, इट्स योर टर्न नाउ। अच्छा, ओके, प्लीज। Check. So thank you for this opportunity, and it's already 6. We have crossed 6, so I won't take much time. So here I represent Rang Kalyan Sanstha, which is working for the indigenous Rang community based at Dharchula, and that region is Upper Himalaya regions, and the valleys are Byas, Chaudas, and Dharma Valley. And also, I'm part of CBTS Climbing Beyond the Summits. So basically, I'm an engineer and passionate mountaineer, and I'm working towards DRR. I got this opportunity working through various agencies, and being in the mountain first and climbing so many mountains, I have closely seen mountain ecosystems and how the communities work over there. So this is what we do as a CBTS. I'll just give you the brief introduction. CBTS tries to make use of adventure sports and enable the local communities and women and youth. And also we are trying to link the adventure sports and towards the livelihood of the community. So these are the activities we carry out. And this is the one example I wish to tell you. During the second wave of COVID, that in 2021, April, May, the fear of a spread of COVID reached the upper Himalaya regions. And we all know that government has their own constraint. We can't think of government moving to the higher Himalayan region. They were involved in the district. यहाँ पे गांव तक, तहसील तक भी काम हो नहीं पा रहा था. So RKS took the initiative. They prepared the medical kits for 43 villages. And these 43 villages, I must tell you, the altitude ranging from 8,000 feet to 15,000 feet. And our volunteers, 15 volunteers were prepared, and they were very well trained for those terrains, and they crossed the glaciers, moraines, and during those days, the snowfall was also happening, and landslides were part of that area.
And that particular villages also lack the basic road network and communication as well. So they had to walk almost 12 hours a day for some days to take the medicine kits, COVID medicine kits. Not only kits they distributed, along with that kits, we have prepared in our own Ranglo language that do's and don'ts, which were issued, the guidelines issued by the Government of India. We made it in the audio form in our own language, and we used to play in each and village, and we shared those audio things so that they get to it. So that was a kind of commitment was done from the Rang Kalyan Sanstha. So what we realized was, like, we can't wait for the government or agencies that they will come and do something. And we must prepare ourselves first, because we are the first responders to any disasters, and we must think on that line. So these are some scenes you can see. We are crossing, glaciers and all, and it is not simply distribution of the thing. We were, the villagers were guided how to make use of those medical kits, even the oximeters, PP kits, sanitizers, how to take care of the medicines in case of any symptoms, how we should cater to those things. And the second incident I wish to share is, you can see the Kulaghat Bridge. This is 10 kilometers ahead of Dharchula. This was collapsed due to the flash flood on 8th of July 2021. And for the next 4 days, not a single government machinery responded to this. And since this was the only lifeline for almost close to 53 villages, catering 20,000 population, so people were risking their life and they crossing the bridge. And one woman was like, thankfully, she was saved from being washed out from this particular river. So taking note of this, the CBTS volunteers, and I must say this, that all those volunteers who led this particular mission was all women mountaineers who were taught, who were trained under the guidance of our team, under the banner of CBTS and RKS. They took the charge, they took the permission from the administration that such and such things are happening, and we have to take care of them, otherwise some casualty may happen. So they prepared a makeshift with a kind of bridge with the use of electric poles, and also this, with the help of the ropes, which we learned during our mountaineering days and all the anchors and all, they made a makeshift safer bridge and ensured that for the next 4 to 5 days, all the elderly people, the children, the elderly who came for the treatment to the Dharchula regions, they were safely made to cross this particular area. And after pushing with the help of the RKS and all, they prepared the makeshift bridge, which you can see at the center. Once this was done, then our team left the particular area. So what I mean to say is, like, again, whenever the disaster struck, the women, I think the women are the one जो पहाड़ों में चलाते हम बोलते हैं, they are the thing which glue the entire community or the local community or the family and so they are the ones who are the first responders and indigenous communities. Yeah, thank you. So these are the media which covered. Okay. So these was covers, even Delhi में भी ये papers में आया था ये सारी चीज़ें. तो मैं just अब brief हो रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही है, we need to institutionalize the participation of grassroots groups. ये चीज़ होती नहीं है हमारे साथ, क्योंकि ये सारे जितने भी आते हैं हमारे volunteers, backstage में काम करते हैं, ना ही हमारे पास कोई formal हमारा government के साथ कोई link रहता है, ना ही informal तरीके से इन लोगों को कोई प्रोत्साहन मिलता है.
सो आई थिंक इट्स हाई टाइम. आज भी मॉर्निंग के सेशन मैंने अटेंड किया था मॉर्निंग में, तो NDRF से हेड आए थे, एक्स हेड आए थे, उन्होंने भी बात की थी कि ग्रास रूट ग्रुप्स को इंस्टीट्यूलाइज करने की बहुत ज़रूरत है. साथ ही जो पार्टनरशिप डेवलपमेंट की बात हो रही है, या हमारे लोकल NGO है, या लोकल इंडिजिनस कम्युनिटी है, वुमेन है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, या नेशनल लेवल के गवर्नमेंट्स हैं, उनमें अगर हम एक पार्टनरशिप बनाया जाए तो अपार्ट फ्रॉम एक साथ काम करने के लिए जो DRR के कॉन्सेप्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने में ईजी रहेगा, उसके साथ साथ ही अगर उस एरिया में अगर कोई चीज़ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको एज अ मॉडल करके उन एरियाज़ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ मॉडल करके. तो इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, मैं इसी में ख़त्म कर रहा हूँ. थैंक यू. Also given a policy, initiative, block level or district level, I think those who are responsible for disaster management, they should have an inventory of stakeholders, like you were there, somebody else, that in crisis we immediately flag that. Okay, who's available locally and who's available in 10 kilometers, who's available in 30 kilometers. So that is nothing impossible. So I think a very good suggestion. Thank you. Yes, madam, now it's your turn. I think you have enough of patience. You could listen to all of them. But I think you can really summarize also for everyone. Thank you. थैंक यू. मेरा नाम मलिका विरदी है और मैं योगेश के बगल वाली घाटी से उत्तराखंड के एक कोने से आई हूँ जिसका नाम मुनस्यारी है. मैं 2 बार सरपंच रह चुकी हूँ वन पंचायत की, और एक तरह से क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया समराइज़ करने को, तो आई विल गिव इट अ ट्राई. मुझे लगता है कि जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो अक्सर हम गाँव के लोगों को कम्युनिटी के रूप में डिसमिस कर देते हैं. अमॉर्फस है, कौन है ये कम्युनिटी. पर असल में अगर आप देखें तो हम सब नागरिक, सिटीजन्स कम्युनिटी के हिस्से हैं. हम जब डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की बात करते हैं या आपदा की बात करते हैं, हम सोचते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो ही कुछ करें. और आज देखिए जब हम सिटीजन्स स्ट्रेंथ या सिटीजन्स एक्शन की बात करें, we find that there is hardly anybody willing to listen. Actually, हम सब जो यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, ये हम सब की जिम्मेवारी है. कम्युनिटीज़ हमसे अलग नहीं हैं, ये सिटीजन्स अप्रोच है. डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम सोचते हैं कि सिटीजन्स जो नागरिक कहें उसी को हम फॉलो करेंगे. बट जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, सिटीजन्स आर नॉट कंसल्टेड when most of these projects are made. 2013 के फ्लड्स की बात हुई, सारे डैम्स जो कुमाऊं रीजन में थे इम्पैक्ट हुए. गढ़वाल के भी काफ़ी इम्पैक्ट हुए. हमने बार बार सुना है कि उससे क्षति होती है. बट पुराने ज़माने के जो गांव घर के बशासत थे, सेटलमेंट्स थे, कोई नदी के पास नहीं अपना घर बनाता था, क्योंकि पता था कि नदी अपना काम करेगी, फ्लड करेगी, सेरा बनते हैं, उसी से फिर आप वहाँ खेती कर सकते हैं. पर आज के दिन हम रोड्स कहाँ बना रहे हैं? बिल्कुल वहीं पर जहाँ सबसे सरल है, नदी के किनारे. रोड्स तो फिर जाएंगी. रोड्स में ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग होगी तो लैंडस्लाइड्स आएंगे. क्या ये वाकई नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं? मुझे लगता है वी पुट आवरसेल्व्स इन हार्म्स वे. और आप में से कई लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट. मुझे तो लगता है कई बार एवरीबडी लव्स अ गुड डिज़ास्टर, क्योंकि जब डिज़ास्टर्स होते हैं तो बात करने के बहुत मौके मिल जाते हैं. और वी कैन थ्रो मनी एट डिज़ास्टर्स, बट आई डू फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, द स्पिरिट टू प्लान, द स्पिरिट टू अवॉइड डिज़ास्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस. वन पंचायतों की बात करके मैं कंक्लूड करूंगी. हम लोग की ज़िंदगी हमारे जंगलों से गुथी हुई है. मेरे से पहले सरपंच साहब ने भी कहा, जो ज़मीन को पकड़ के, जगह को पकड़ के रहते हैं, वो अपने इलाके के, अपने जंगलों की हिफाजत करते हैं. उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी उस पर निर्भर है. निश्चित तौर से हम नहीं चाहेंगे कि हमारा विनाश हो, क्योंकि कई बार हम लोग इस तरह की सभाओं में या विकास की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, सुनते हैं
विकास के साथ विनाश तो होगा ही। मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ती हूँ, वो ये है, किसका विकास और किसका विनाश? धन्यवाद। आपने बहुत ये यक्ष वाला प्रश्न छोड़ दिया कि जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, तो आप सब जानते हैं वो जवाब क्या था, और आपका भी वही जवाब यही है जो यक्ष ने युधिष्ठिर को कहा कि सबको पता है अंत होना है, पर फिर भी हम उसको अनदेखा करते हैं। जो आपका प्रश्न है कि विकास तो होना ही है और किसका विनाश होना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए समाज को आगे आना होगा और थोड़ा शोर मचाना होगा कि किसी और का विकास और मेरा नाश, ये कब तक चलेगा। ज़रा सोचें, और यही शायद आपने सबसे बढ़िया समापन जो किया है, इससे अच्छा समापन नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच मैडम। डॉक्टर रावत, नाउ ओवर टू यू। पैनलिस्ट में कई लोग, जैसे हमने जो 4 ग्रुप बनाए थे, उसमें से कुछ मेंबर्स ब्रीफली, और अगर जैसे प्रोफेसर रीमा पंत हैं यहाँ पे, उनको एक पैनलिस्ट होना था, बट क्योंकि उनके ग्रुप में बहुत कम्युनिकेशन और जो हमारा पॉलिसी वाला जो ग्रुप था उसमें कम लोग आ पाए, तो प्रोफेसर रीमा पंत अगर यहाँ पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। उसी तरह हमारे लद्दाख से एक सज्जन आए हैं, मैं उनको एक्चुअली उसके लिए तो नहीं, पर आपको स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। यू टेक यहाँ पे आके आप मोमेंटो ले लीजिए, और क्योंकि अब टाइम कम है, तो प्रोफेसर रीमा पंत इज देयर। हाँ, प्लीज प्लीज। गुड इवनिंग ऑल पैनलिस्ट। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, बट मैं इतनी देर से आप सब लोगों को सुन रही थी। हम कम्युनिटीज़ और ग्रास रूट की बात कर रहे थे। मुझे लगा एक छोटी सी बात मुझे कहना बहुत ज़रूरी लगा, जो शायद ब्रिजिंग के लिए है। जैसे आप लोगों ने कहा, सब लोग जब गांव में रहते हैं तो एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ नहीं है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो वो ब्रिजिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जैसे मैम ने भी कहा, कि हम उन बच्चों को गांव में लेके जाएं और गांव और शहरों के बच्चों को साथ में मिलके कुछ काम कराएं, जिससे कि इंटरचेंज हो सके, जिसको इंट्रा जनरेशनल इक्विटी कहते हैं, शायद उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, जिससे कि ये मैनेज हो सके अच्छे। दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। हेलो, आई थिंक व्हाट यू हैव मेंशन, रावत साहब, एक मुझे बात याद आई जी। I was managing दिल्ली जल बोर्ड फॉर 4 years, और सबसे कठिन टाइम होता था फरवरी से लेकर जून तक, क्योंकि फरवरी मार्च में वो पानी जो है वो हरियाणा वाले ले लेते हैं यमुना का, क्योंकि गेहूं की लॉबी है। तो दिल्ली वाले बड़े दुखी होते थे। मैं तो खुद पहाड़ का, हिमाचल का हूँ, और बचपन में देखा है कि पानी या पहाड़ के ऊपर होता है या नीचे होता है, बीच में नहीं होता। तो दिल्ली वाले हमेशा कहते थे पानी नहीं आता हरियाणा से, उत्तराखंड से। मैंने कहा आपको मालूम है कि जितने दिल्ली वाले हैं उनको उत्तराखंड और हिमाचल के हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए कि आपका पानी वहाँ से आ रहा है क्योंकि उन्होंने जंगल बचाए हैं। जो आपने बात कही है, शहर वालों को ये पता रहना चाहिए कि उनका पानी पहाड़ के बदौलत है। गंगा एक्शन प्लान जब बनी तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक डाटा, आई वॉज मेंबर ऑफ दैट कमेटी देयर, कि 49% पॉपुलेशन इंडिया की, उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2010, वो गंगा या गंगा की सहायक नदियों से पानी पीती हैं और एग्रीकल्चर चल रहा है। तो गंगा तब है अगर पहाड़ है। तो आपने जो बात कही है, हमें प्लेन्स के लोगों को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा हिमालय में, और ये बिल्कुल सटीक बात है आपकी। थैंक यू डॉक्टर रावत। हाँ सर, और को चेयर, आपको अगर फाइनली इस पूरे उसको अगर सम अप करना है तो यहीं पे अगर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मोमेंटोस और लोगों आई वुड रिक्वेस्ट, आई थिंक Kotru Saab to really conclude in 2 minutes. Yes. I have spoken quite a bit in between. लेकिन प्रश्न वो मैडम का बहुत अच्छा है, नाश और विनाश किसका, ये जरा आप सब सोचिएगा। डॉक्टर कुट, हाँ यहीं से कर दीजिए। सबको फिर से नमस्कार। ये फिर मौका मिला, मैं कोशिश करूंगा इस दफ़ा हिंदी में बात करने की। पहले तो जितने भी माननीय
रिसोर्स पर्सन यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि the amount of experience and enriching experience they all have really done in the mountains is really simply remarkable. So because that was remarkable, so we have also benefited from your knowledge and experience, your skills which you have applied in the mountains. So because it's only 2 minutes time, I think it is quite evident, right from what we heard from Mr. Taplial, a very vibrant panchayat who is proactive. For instance, if it can be proactive in stopping forest fires from happening, then that is an ideal local governance, the last tier, which is at the bottom level, that we need. We need a proactive panchayat, where social collectivism is still very ripe, is still very proactive. So that is a model we should really work for the Himalayas, that we have these very strong social institutions, including the NGO experience, which has really come from several of our resource persons here, that they are very, very proactive. And when it comes to catastrophes or crises, they are on the spot, as we heard from the Everest person who really, sorry, I'm not getting his name straight away, but we heard from him that how they really try to really give the support to villagers, to panchayats when the crisis has come. So that also shows government cannot be everywhere. We have to ensure that the local governance bodies, local communities, their traditional knowledge is acknowledged, is documented, and is built upon. Then only build upon means some of the elements of that traditional knowledge should flow into policy, into practice, and also future science. We might have a very good traditional knowledge, but we are living in a modern world. How can be that traditional knowledge now researched further? How it can be value added? That's what I mean. How can be traditional knowledge value added? And then we can use that knowledge to really improve our development strategy of our, very holy Himachal, sorry, not Himachal, but Himalayas. I think that is one part. Second part is, where should we go from here? The last sentence, which was given by our Honorable Lady, Kiska Vikas or Kiska Vinash? Who will be developed and who will be destroyed? I think it's a double-edged sword. As we say, also the development is a double-edged sword. Therefore, we should always screen all the programs which are being implemented in the Himalayas. Whether it's road building, whether it's fire management, whether it's some kind of a rejuvenation of a spring shed, we should ensure that those schemes which are coming from the central government or from state government are screened when they are being implemented, or first of all, planned with the people. That's a very, very important factor, that these schemes, first of all, are discussed, planned with the people, then they strategized, programmed, and implemented on the ground. I think that is very, very important. Himalaya will need customized policy, customized practice, and customized science for future, because we heard also in the forenoon that we have so many other issues to counter which are non-climatic. For instance, an earthquake. That's a very good example. Or a COVID-like catastrophe. That is taken on board, and we hope that the future policy for Himalayas will come based on the discussion, based on the experience, and based on the recommendations which have come from this particular session. I think we will work for collating all the knowledge and experience which has come from these rich set of resource persons, and will convert into policy and practice recommendations. And we should really thank the whole audience as well as whole set of resource persons here, giving us that knowledge and experience which we want to take forward for making changes in policy and practice and future science. Thank you. Thank you. Thank you so much. Final one, just मुझे याद आया, जो इन्होंने कहा कि पॉलिसी कैसे बने, तो मुझे याद आया कि संस्कृत में है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। वो जो मैडम ने कहा किसका विनाश और किसका विकास, हम अगर सबकी बात करें तो ना हमारा विनाश हो, ना ही किसी और का नुकसान भी हो।
So that is the way forward. Thank you so much, sir. Now I request chairperson of this session to kindly give the memento to all the distinguished panelists here. Can I have just quickly, you could just hand over and we will finally have a group photograph. And I request Mr. Dr. Mustafa Kamal from Ladakh. He has come all the way to share his experiences. He has also been very, very important participant. So sorry we could not get. Yeah, please. Yeah, yeah. And then one by one, I think no need to call names, but we can quickly come starting from Dr. Laldin Puya. You please stay here. We'll have a quick group photograph. Yeah, Thablal ji, aap aate jaiye. I think we should not, spend too much time on. Requesting Professor Durgesh Pant ji to kindly honor chair and co-chair of this session. मैं समझ रहा हूँ मैं तो एक ही छोटे काम में ही मैं Professor Durgesh Pant ji will पहले कायदा ये कहता है कि पहले को चेयर साहब को वो करेंगे ऑनर करेंगे आप दे दीजिए प्लीज and then chairperson Sri Ramesh Negi ji, please. Okay. Thank you very much. A quick. Durgesh Pant, I request Professor Durgesh Pant sir to present a gesture of honor and appreciation to the session rapporteur, Professor Dr. G.S. Rawat.
महाभारत में जितना महत्व जो है सर उस रथ का था और अर्जुन का था, उतना ही महत्व, बल्कि उससे ज़्यादा महत्व उस रथ के सारथी का था। तो आपका फेलिसिटेशन बनता है सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टीयरिंग दिस वंडरफुल सेशन एंड प्रॉब्ली सर द मोस्ट हेवी वेट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट सेशन ऑफ द एंटायर कांग्रेस, ऑल्दो आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी अदर सेशंस, बट स्टिल। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the world-famous saying goes so that all work and no play makes Jack a dull boy. So, पूरे दिन भर की बौद्धिक और अकादमिक डिस्कशंस के बाद अब समय है कि हम इस खूबसूरत शाम को सांस्कृतिक संध्या के रूप में परिवर्तित करें। कुछ ही पलों में हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। वो हमारे इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपना समय दिया है। और अरे रुको भाई, पहले अनाउंसमेंट कर दें दैट वी नीड पीपल टू स्टे हियर फॉर द कल्चरल इवनिंग। ऑनरेबल सीएम इज कमिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव ऑल योर बाइट्स। हो गया, अभी करना है? यस सर। Sir, one second. Yes, sir. I request all delegates, invited guests, ladies and gentlemen, students, faculty members and staffs to be ready and take their seats in the hall. Sir, ko. वसुधैव कुटुंबकम हजारों वर्षों से भारतीय मनीषा का मूल मंत्र रहा है। एक मंत्र जो पूरे विश्व के लोगों को
एक परिवार बना था। इस समय हमारा विश्व परिवार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली समस्याओं और आपदाओं से घिरा हुआ है। इस विषय पर चिंतन करने और समाधान ढूंढने के लिए महान हिमालय की धरती उत्तराखंड के देहरादून में इस वर्ष 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया जा रहा है। गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण व विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और उत्तराखंड के युवा दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे।